फाइल लेने चले। सोच कब करके बोले कॉफी लिया। एक कप कॉफी लिया, ये बोलेगा ना आगे आके।
May I request, Pankaj, can you call the speakers inside, please? We are starting the session. नमस्कार मैं आपका आपको नमस्कार कर Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to this very, very important conference on cyber laws and cyber security. And as we know that the need for a secure cyberspace has become very, very imperative, particularly when we are seeing there is exponential surge in the number and type of cyber threats, particularly of critical infrastructure. So when we talk of critical or strategic infrastructure, wherein the national security, comes into mean whenever we talk of public infrastructure or critical infrastructure. And the latest example, as we have seen, being the continuing disruption in New Delhi's, AIMS hospital, which has actually, eroded a lot of patients' data. It was a big breach of cybersecurity, and it was a big cyber threat. So there was a report published in 2022 by the Microsoft Digital Defense Report. It stated that there is basically, nation across, there are different actors who are, launching increasingly sophisticated cyber attacks to target critical infrastructure, particularly IT sector, financial services, the banking sector, transportation system, and communication infrastructure. And as we know that whenever there is any threat to any of these public infrastructures or even, private organizations, there's a lot of, problem particularly that happens, and that also breaches sometimes in national security. It also breaches the normal working of the organization. It results in a lot of resentment among the governance systems, and particularly for public infrastructure, it also erodes the citizens' confidence. So enhanced cybersecurity and cyber protection is definitely the need of the hour. And as you all are basically IT experts, and now we have come to a conclusion that IT, or you can say the cyber security, is not a luxury, but it is definitely a very, very important imperative that we have seen in few years. So, and in fact, as we all know that right now, India has the G20 presidency. And within this G20 presidency, there are multiple initiatives which are being taken by Government of India also in terms of harmonizing between different national agencies, as well as some of the private sector also. There's a lot of talk on harmonization between the National Computer Emergency Response Team, which is known as CERTS or CERTIN, that is one of the important organizations that basically gives secures our public cyber infrastructure. And also, CERTINs, they are also at the forefront of reporting cybersecurity breaches and incidents. And India is positioned to become a global leader in terms of data, technology, digitization, and inclusion. So in order to understand the nuances, the nuts and bolts of cybersecurity, and what are the different cyber laws that are basically creating an enabling ecosystem for all the IT professionals and cyber laws, professionals to actually improvise the present infrastructure, particularly the cyber one. PhD Chamber of Commerce Industry has basically curated this important conference. And in fact, we do such conference more or less every quarter, because sir, what we have seen like over the period of time,
industry, we are getting a lot of queries from the industry that we are always at the threat, because there are incidents when the entire servers totally gets, ransacked because of some ransomware or because of any other critical, digital asset that comes in between. It may be a sort of a spam, even a small spam mail, or even maybe some, malicious link can actually totally, erodes the total infrastructure, the cyber infrastructure of the organizations. So in order to understand the nuances, how this should be treated, as we are doing this program with all of you domain experts, and it's not just a knowledge session. We'll be doing some interactive thing also. And the end result is that we'll be coming with a white report or a white paper on this thought process, that what actually goes inside in terms of the discussion, and how, like in terms of the bill that is in pipeline, the data protection bill, and also whenever there's any policy recommendations in terms of making any amendments in cyber laws. So this white paper becomes very, very handy for all the public sector organizations. So without any further ado, sir, I will first of all request our first distinguished speaker, Colonel Abdul Hamid Khan Saab, who is the commanding officer, 70G Battalion, to kindly start the proceedings. Sir, with your deliberations. Over to you, sir. Let's give him a big round of applause. Thanks very much, sir. Good evening, ladies and gentlemen. I'm Colonel Abdul Hamid Khan. I'm very, very happy to be here again. This is the second time I'm coming here, and this time for a very pertinent topic, something which is, as Dr. Jatinder brought out, very real, current, and challenging. So as we all look towards digital India and endeavor to benefit from it, which is designed to transform India into a knowledge society, a digital economy, on one hand, brings in prosperity galore. But on the other hand, it's got the challenges which Dr. Jatinder just brought out in immense measure. 4 days ago, I read in the newspapers that one colonel of Delhi lost 14 lakh rupees to some fraudsters who posed as CISF officers and tricked him. On the same day, I'm sure hundreds and thousands of other people also would have lost some amount, maybe smaller, and that's why not reported. And it's an everyday occurrence. All of us see our emails full of spams, phishing emails with attachments, and such malicious codes which have got the potential to loot us all. Those who play free games, they are often encountered with these prompts that you click here, your flash is not updated, or your drive is full and you need to clean it, install this, install that. Obviously, we all are used to such things, and what it can lead to, some malware which goes and installs in your computer and can play havoc. As per some estimates, the annual losses presently due to cyber crimes are to the tune of $1 to $3 trillion. Now, ladies and gentlemen, that's equivalent to 1% of the entire global GDP put together. Some reports also say that in 2 years' time, it will escalate to 10 trillion, which is taking it closer to 10% of the entire global GDP. That's staggering. Reports also say that cybercrime is one of the fastest growing crimes, surpassing even the global terrorism and global narcotics all put together. Going a step further, I have worked in the network-centric warfare environment in Directorate General of Information Systems. So where we wanted to capture the benefits of the net centricity and bring the automation in the battlefield. But while it endeavors to bring that benefit to us, it has posed a big vulnerability and a challenge to the warriors.
in form of the cyber warfare. So these prompts which come to us on the emails, one of them could be a potential trigger for a big bomb of cyber warfare. It could be some employee in an organization of the connected computers who opens this email and could let the malware install in its computer, in his computer, and thereafter inadvertently let it spread laterally in the organization, assume or escalate its status initially, and then thereafter assume admin rights and play havoc. The entire organization is compromised. So yes, in addition to the cyber crimes, we also faced with this big challenge of cyber warfare, and that's real. Unlike the conventional warfare, there are no frontiers defined in cyber warfare. There's no front, there's no rear, there's nobody protected. Everybody is vulnerable. Even a person who didn't have anything to do with IT, an old pensioner, is also equally at risk. The entire nation's assets could be a potential target, all because of one malicious software, a malware playing havoc. And this warrior of the cyber warfare, as well as, of course, the cyber crime, would be some lean, mean IT professional with no exposure to the combat or no record of crime, but has the potential to become the biggest terminator of all times, and often working from home. So while the cyber warrior and the cyber criminals, they may have different motives, but the methods are almost similar. Although there are differences between cyber warfare and cyber crime, since today there are several experts here who will be talking about cyber crimes, associated measures, and also the legal aspects, I'll focus more on the cyber warfare aspect. Cyber warfare is typically carried out by the state-sponsored or politically motivated non-state actors or the terrorists, or the organized groups on their behalf, with the objective of advancing their geopolitical strategy and the strategic objectives by doing espionage, carrying out sabotage, denial of information service, launching propaganda, disinformation to influence public opinion or to sow seeds of discord. We have seen these examples happening in the US elections and various other places, or to wage economic warfare, disrupting the financial transactions that he was talking about. Power transmissions, they can affect the transport system, etc. Cybercrime, on the other hand, it's primarily driven by the financial or organizational motives. Although at times there are also propaganda or a lower level propaganda, and perception management is part of it. Cyber warfare falls in the realm of the international law, which I'm sure you, as some of you who are law students here, would be dealing with. It's a new emerging field, while the cyber crimes are dealt by the domestic laws of the land. The methodology of the cyber warrior is that it finds a way to intrude in the system, either by finding a vulnerability or by having pre-hand put an embedded system. So the ways are to do hacking, malware deployment, information manipulation or disruption of, or the damage of the information systems or the networks. The embedded systems which come pre-installed have now been tackled to some extent by a lot of advisories that we all would have got, saying that we must not use hardware from so-and-so and so-and-so companies. We must not use phones of so-and-so companies in government sectors, of course. It has been ensured. Same would be the case with the private organizations also. The other methods are by using the advanced persistent threats, APTs, which ensure that the response mechanism of the defender is not triggered by keeping the offensive action at a low key, just below the threshold level of the detection. So that's how it persists. And one of the most important features of the cyber warfare is
also the attribution challenge. That is the determination of the true source of the cyber attack. So is in the cyber crime, but to a higher degree in cyber warfare. And with the advancement in the fields of artificial intelligence, machine learning, in days to come, this is going to be even more challenging than what it is today. On the defensive side, when the actions are taken to do the countermeasure and that data assurance at all times, that also falls in the purview of cyber warfare. Now, the examples of cyber warfare we have in plenty, but some of the most prominent ones are the Stuxnet bomb attack of 2009 and 2010, wherein the Iranian nuclear facilities had completely stopped working due to this worm called Stuxnet. Then there was a WannaCry ransomware attack in 2017, which had affected all across the globe. 150 countries were affected. All the millions of computers had got encrypted. Huge ransomwares were paid. The vulnerability was in the operating system, wherein it exploited it and encrypted all the files. Then in the ongoing Russia-Ukraine war, it's completely intertwined with the conventional warfare. Every day basis, we have seen a lot of cyber warfare playing out, playing havoc with the economic systems, with their complete governance. Now coming to the response. The response to cyber warfare, the spectrum is that the risk assessment needs to be done, the risk mitigation by protecting own information infrastructure, enhancing cyber resilience, giving a befitting response, and doing recovery. So to deal with it, any organization or a nation would require to spell out its strategies, its policies, create organizational structures to deal with it in a coordinated manner, strengthening the legal framework, promoting collaboration, promoting doing audits, forensics, and raising awareness of the public in general and also the organizations. Coming specifically to the Indian scenario, we in India have done quite a robust cybersecurity stance we have adopted, and it's worked fine. The IT Act of 2000 was promulgated way back. Thereafter, it was updated to meet the newer challenges. Thereafter, 2013 cybersecurity policy came up, which is working fine, and we are very soon in a process of spelling out our cybersecurity strategy, maybe soon in 2023 itself. The organizational structuring in our country has been done to create an ecosystem involving various ministries and the states, ours being a very, very big country, diverse states, languages, people, and organizations. So, in terms of institutions, we have at the apex level the National Cyber Security Coordination Center, headed by the National Cyber Security Coordinator, who incidentally happens to be my ex-boss, Lieutenant General Rajesh Pant. We worked together in some of the battlefield management system projects in Directorate General of Information System. So then we have at the national level the NCIIPC, that is National Critical Information Infrastructure Protection Center, the I4C that you all would be aware of, Indian Cyber Crime Coordination Center under MHA, which is the designated nodal agency to fight against the cyber crime, where it is reported the first hand. And under the MEA, we have the Cyber Diplomacy Division, and besides, of course, we have the certain computer emergency response teams. We also have the information security awareness programs run by MeitY, Ministry of Electronics and IT, to spread awareness. Similarly, at the state levels, we have CSIRT, cyber security incident response teams, and the security ops centers, SOCs. And in addition to that, we also have the sectoral CSIRTs, that is sector-wise power sector, banking CSIRTs, etc. And besides the government response, of course, the private sector has its own ways, the procedures, and some even have the SOCs, cyber operation centers, or security operation centers. Due to the interconnected nature of this cyber space, the government also collaborates with the private sector and shares information to enhance cybersecurity measures and respond effectively to these challenges. Since this field is ever evolving,
the future challenges also need to be met and looked after. So for that, Government of India has devoted adequate budget for doing the research in that field. But despite all the safety measures and regulatory mechanisms in place, the cybersecurity breaches do take place. It happens because of one odd vulnerability somewhere, and it will happen in future as well. So at the individual level, we all need to be certainly very, very aware about it, sensitive to it, and practice cyber hygiene and all the advisories which are given to adhere to them strictly, to have 2-3 levels of authentication process, updating software and all those things, not to click links, etc. Although there are bigger challenges also at play, softwares like Pegasus, which do not require any clicks. So we need to be very careful. We have to realize that cyber warfare may not be kinetic in nature, means that it may not be throwing bombs or exploding minefields, but it certainly has the potential to escalate and trigger a conventional war. So we must remember that cyber warfare is a critical one and is a shared responsibility. The government, the private sector, and the individuals all have to play their role to protect the cyberspace of the country. Thank you very much for giving me the opportunity. Jai Hind. Thank you, Colonel Saab, for giving a very, very important perspective on what's happening in the cyber era. Right now, as we said, that the conventional warfare will be replaced totally by the cyber warfare, wherein you may not require any, tanks or machine guns. It will be totally just a small virus can actually totally, disrupt the entire nation's fabric and infrastructure. Thank you very much for your perspective, sir. So we have Dr. Gaurav Gupta, who is accompanying Colonel Sir. Dr. Gaurav Gupta is the Associate NCC Officer, 6th Delhi Battalion, Group B, Headquarters Zone 15 Delhi. Thank you, Dr. Gaurav Gupta. Thank you. We have next speaker, Professor N.K. Goel. In fact, Professor Goel does not need any introduction, but just for the sake of a small intro, I'll just read his brief profile. Professor Goel is a senior ICT professional and educationist. He's a postgraduate in science. He's the president of CMA Association of India, which is the Asia's largest ICT association with 48,500 members. And he's also the chairman emeritus of Telecom Equipments Manufacturers Association of India. It is the oldest association in India for telecom, which was established in 1990. And coming to this topic, he's also the president of Cyber Security Association of India. So very, very apt speaker. And in terms of his contributions, he is known as Bhish Pitama of telecom and ICT sector. In fact, as I told you that he is a mentor for so many people, particularly in ICT space. And he's also connected at the highest level for policy formulations of telecom, ICT, education, cybersecurity, and international trade. In fact, whenever we go in different government committees, probably, in fact, in most of those committees, we'll always, see his presence, and he makes his presence felt by giving a lot of, tangential thoughts, which are actually very, very disruptive and which are very, very forthcoming and very, very futuristic. Thank you, Professor Goel, for being a part of this journey. And let's welcome Professor Goel with a big round of applause. Thank you, sir. Thank you very much for speaking so much about me, which I don't deserve. I want to thank you for a few things. First, for the conference. Secondly, for putting me sandwich between Abdul Hamid ji and Kushal ji. Both of them are cyber experts. I am not a cyber expert, even though I am the chairman of the association, but not so. But another thing is I find lots of young people here. So what I have a very big PPT. I will leave it with the chamber. All of you can access it wherever you want. Few things I will share with you. The first thing is the last thing should I say, but I'm saying the first thing. The 4 takeaways you must go from here. Nothing is free in this world. This is the biggest takeaway. Nothing is free in this world. So anything you are availing free is not free. It is costing you somewhere. Biggest takeaway. Second,
We all of us, what we do, we open so many windows in the computer, one year, like this 4 or 5 windows are opened. So impulsive, there is some pop-up of something. So to avoid going to that, we simply click say yes it. So develop the habit of opening one window at one time, which is difficult for you now, but develop this habit. Third takeaway, take it as a home, as your what do you call tijori, where you keep the money. Don't allow anybody to come in. We allow everybody to come in without asking who are you. Third takeaway. Fourth takeaway, which we all know. Why even a colonel of army has been duped? Because the hackers, the bad hackers, they are not BTech, they are not IT professionals, they are 10th fail, they are not sitting in an office, they may be sitting on a tree somewhere, working for 2 hours, but they know the human psychology. There are specific courses for them which they go, nothing technical. The only course is human psychology. What should I say so that I get you trapped in? Your account will be blocked, your phone will be blocked, all such type of things they say. We have to develop the habit of not getting trapped. Earth will not fall if somebody calls you, I am the manager of State Bank of India, your card is going to be blocked. Let it be blocked. Stop the phone. Let it be blocked. Because no real banker will phone you. And that's what I am saying. So don't believe OTP, clicking, everything. And my last advice is nobody will agree. Keep 2 phones with you. One phone, no internet, no banking, nothing. Use it for OTPs. Other for the internet, etc. Even though I am going to speak against the government policy, avoid digital payments on phone as much as feasible. As much as feasible, unless you are under tremendous pressure or something. But let me tell you, even though I am chairman, running around 27 associations, I don't use any digital payment in my computer or in my laptop or in my phone. Hell with it, I will pay tomorrow, not today. So these are the 4 takeaways I want to give you before, which should come at the end, but in the beginning. Another thing, I will leave the PPT to be given to all of you. Human mentality with the exploit, one of them is, we all know death is inevitable. Death is inevitable. But we think, मैं तो मरने वाला नहीं हूं, वो मेरा पड़ोसी मर गया है. Same thing happens in the cyber risk. Cyber risk is like a death. It is coming to you. It has come to you. Nobody on this earth has been safe from cyber. Nobody on this earth will be safe from death. So it is bound to be there. उसको accept करो और उसी इस lifestyle को बदलो. Social media is another big thing. The interesting part is all those who invented social media, Bill Gates, Sundar Pichai, etc., Steve Jobs, their children are not allowed to use mobile or internet. And the entire world has been sacrificed in these things. Avoid as much as possible. Use it for business purposes. That is another thing of this thing. Now, another point is, cyber is not something new. It is there with us since the days of Ramayana and Mahabharata. There are lots of students here. Can anybody tell me an example of cyber? We all know. Okay. No, anyway, but sir, this is the example of technology. He was using something like a phone or like video camera or other thing, but not, I'm saying the cyber risks. We all know. Everybody is of know, but only thing is you don't recall it. I'll tell you. The biggest example of Ravan was taking away Sita.
First of all, Ravan came in the disguise of a sadhu. Here also, everything comes up in the disguise of, I am the manager of the State Bank. I am calling from Ministry of Home Affairs. Disguise. Second, Lakshman has put a wall or a line or a rekha, which we call firewall now. And Sita breached the firewall. This is the biggest example. Third, in the same thing, there was a Hiran with gold. I mean, just think it over. Is Ram or Lakshman or Sita so fool that they don't know there cannot be a Hiran with a gold? Or do they really want a gold? They have left their Raj Bhavan and kings and in the jungle and they are going after gold Hiran. This is the mentality which hackers are using now. If hacker at that time, Ravan can change the mind of Ram, Lakshman and Sita to believe golden Hiran, they believe it today also. And now my next topic is the entire world is after you to cheat you, to take money from your pocket. Every day they will invent a new technology, 3G, 4G, 5G, AI, M2M, etc., etc., etc. Sir, no technologies in the world does anything for safety or security of the technology. The 5G we are talking now, which is the very hype word. When it was made, nothing was considered for cyber security. The only line is operator will take care of cyber security. That's all. The more you go advanced, the more they are risking you. So far, earlier risk was only from a computer, then from a laptop, then from mobile. Now, with the 5G, with IoT, it will be from your fan, from your house, from your camera, from your car, from anything. Even if you are using जो हार्ट की मशीन होती है, उसमें भी रिस्क है, पेसमेकर. So see the technology moving in that way. And in future we'll go for 6G. Another point of technology which I say out of joke, whatever we are making the technology persons, they are making human irrelevant. In the metaverse, there will be some place called world which will have India, Japan, Korea, Taiwan, which will have Colonel Hamid, N.K. Goyal, Kusal, Kaushik, Jindal. All are doing something. All virtual. So what is the need of a human being? That's the technology they are doing. The last part for younger generations, especially if they are students here. Whatever, sir, we say in the government, in any part of the government, the biggest irony of cyber is, if I lose 500 crores in my cyber, there is no law against me or against the hacker. If I don't report to Colonel Hamid as in charge, nothing will happen to me. So we always hide it. We always hide it. But for you people, with the data privacy law coming in, there will be heavy penalties if you don't report the data thefts. So all of you should give a thought on this. Believe it is going to be important even for PhD Chamber of Commerce, even for Haldiram, Bhujiaram, even for Agabar Sweets to have a data officer. Another interesting point is, nobody teaches you cyber security. I am repeating, nobody teaches you cyber security. What they do, they have a course of BTech in computer science or electronics, and cyber security is a subject attached to it. And Kusal knows, and I think he will cover this thing. What they teach generally is firewall, antivirus, malware, etc. As an association, Mr. Kusal is also on the board. We were under tremendous pressure from the government. So for the first time in the world, we have started BTech cybersecurity courses for 4 years in Uttarakhand Technical University and PG diploma in cybersecurity for 1 year. We are facing lots of challenges as usual. The biggest challenge is there are no teachers available. So all of you as a young generation should go for this. Try to keep some time off
from this media things or phones things. Why should we have everything on one device? Why? Just change the habit. Don't get attracted. I will stop here with this and PPT will give it to you for study. Thank you. Thank you very much, sir. In fact, you have given us the fundamentals of how to actually, escape all these cyber threats, and they also how we can actually imbibe some of the tools wherein we'll be safe from all these attacks. Thank you very much, sir. In fact, you rightly said, like whatever is free basically is something behind that. Then for any free thing, then we become a product. All the Facebooks of the world, the Metas, the WhatsApp, nothing is free as such. We never know where this data is being circulated. And so for digital security payments, like digital payments, I think that has become essential part of our transaction. It's very difficult to actually evade that. So one of the practices that can be done, for example, what I do, like keep a separate card wherein I put only 8 to 10,000 rupees. All transactions are done by that card only. So that is one of the safest bet that can be done, because like paying phone bills or something like that, it's very become difficult to go to the Airtel or Vodafone shop and give them a check. It's a hassle, and digital payment is just at the click of the mouse. So, thank you very much indeed. Thank you very much. Now we have our domain expert, Mr. Kushal Kaushik. Mr. Kaushik is a renowned cybersecurity expert who is the founder and CEO of India's leading cybersecurity organization, which is Lisianthus Tech. He has extensively worked in the field of cybersecurity for the past 10 years and has been recognized by some of the biggest international organizations in the world, such as UNESCO, Northwestern University, Chicago, and many more. Some of the achievements as a cybersecurity expert: he was featured by UNESCO for the exceptional cybersecurity expertise in 2018. He was also featured in the research paper based on cybersecurity in UNESCO in 2021. He also received the Glory of India Award 2020 by the Indian Achievers Awards Forum. He was honored by the Republic of Panama for resolving a complex ethical email hacking case in 2020. And he was also recognized as the future of cybersecurity in India by a former US Department of Defense veteran and a Navy analyst with over 30 years of experience in cybersecurity. So let us, in fact, welcome Mr. Kushal Kaushik with a big round of applause. Over to you, sir. Thank you, Dhirendra sir, for inviting me, and all the senior dignitaries and the audience. Good afternoon to everyone. So, first of all, before founder and CEO and as a cybersecurity professional, I'm Indian-born ethical hacker. I'm always hack for my country to protect my national securities and digital boundaries. So, for 15-minute talk, into 15-minute talk, I will totally talk on practical oriented cases. So first of all, from the audience, I want to know how many people are using Android phone. Raise your hand. All are in. Android and plus Chinese Android phones. How many? 90% are Chinese. I want to know. I want to know from the audience. So those are using Android and Chinese. इस टॉक के बाद आपको थोड़ी टेंशन होगी. So I'm sorry for that. And for the free Wi-Fi, how many you are using? You are visiting so many places like restaurant and coffee shop and the airport. भैया Wi-Fi है, I have to upload this kind of thing, this kind of file. Tension होगी. So I'm sorry for that. So combating for the virtual risks, cyber security means cyber and security. Because these days, we are totally dependent on the cyber for the small and the large and the medium kind of tasks. So day by day, we are totally dependent on the technical thing. So sometimes this kind of easier task increase the risk of the cyber attack. If you are unaware or due to lack of the awareness, this kind of easier task make us a victim of the cyber attack.
So, sir, Hamish sir, I will describe both things in my talk. What is the cyber crime and what is the cyber warfare? These are the difference. Cyber crime and cyber warfare. So, this kind of visual tasks sometimes increase the risk of the cyber attack and make us a victim of the cyber attack. But due to lack of the awareness, sometimes we don't know what we are clicking and what we are avoiding. So a click काफी नुकसान पहुंचा देता है. So I will also describe which one you have to click and which one you have to avoid. So lots of people ask me many times which antivirus is good, which one we have to purchase, which one we have to avoid. So I want to say no one is perfect, because we know how to bypass antivirus. All are signature based, all are pointer based. If you are unaware, if you are untechnical educated regarding technology, so nobody can secure you. You should be aware. So, sir, talking about the Indian scenario. Abdul Hamid sir talking about the Indian scenario. So, you people are using Android smartphone, and because we have the lack of the awareness, sir, mostly 90% of people are using Chinese smartphone. And I know because we have the lack of the awareness, and in the cyber security domain, when the something is free and when the something is cheap, then the real product is you. Nothing is free, nothing is cheap. So China has a kind of laid off the technical trap to bringing some cheap and technical equipments in India. I want to say mostly Chinese phones comes with two malware, preloaded malware, every. So one is activated, discover a lot of time. Second one is dead malware, very hard to detect. So whenever एक फोन कब किसी आर्म से कब किसी के हाथ में चला जाए, nobody knows. So dead malware is very hard to detect. Is work like as a sleeper cell into your smartphone. So whenever Chinese government and the PLA army want to extract your information, so they with a piece of code they activated this kind of dead malware. After the processing, they collect all the important information in your smartphone without your knowledge, and the malware and the dead malware is all put uske baad again he put into sleep mode. So that's why a 90% mobile user are vulnerable. People said ki I'm using WhatsApp calling, I'm using ye calling, wo calling. So we can capture, we only capture your mic. It does not matter you call internet oriented call or without internet or call. अगर हमने आपका mic capture कर लिया, so we can record anything. It does not matter WhatsApp, FaceTime and Telegram. Everything is recordable. So 19% mobile user are vulnerable. So before, because I have found, and during my research I have tested, during the phone purchasing time in India, what people think? People think I want to buy some cheap phone and I want to buy some good look phone. Thoda camera अच्छा होना चाहिए. Into more than 10 years cybersecurity domain, I have never seen a camera जो किसी इंसानी फेस को enhance कर सके. If अगर ऐसा होता, so this kind of camera very demandable, highly demandable in African countries. So this kind of a Chinese phone is very highly vulnerable. So during the phone purchasing time in India, you have to be more aware about the technical thing. You should find out how many security updates you will get into your phone from your vendor. First thing. And the second thing, if your new phone, it does not matter is Android or iOS, both sides, within 6 months or within 12 months,
आपके फोन की बैटरी डाउन हो रही है इजीली, एंड इजीली फोन हीट हो रहा है, there is something is fishy into your phone. And the second thing, two same operator, two same Chinese mobile, the same locations. मेरे फोन में नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है, प्रोफेसर साहब के में नेटवर्क वीक है, सेम ऑपरेटर, सेम मोबाइल फोन, सेम लोकेशन पे, तो प्रोफेसर साहब के इस मोबाइल में समथिंग इज फिशी, यू हैव टू आइडेंटिफाई. So without tool, without technology, you can easily identify, you can be aware. So with this kind of thing. So these days, lots of people also depending, they also love to play online gaming, gambling, and these kind of the applications. Mostly online gambling applications are vulnerable because mostly server are into China, Arab countries, and other foreign countries. So without your knowledge, without your concern, you whenever you install these kind of the applications, your mobile data, your mobile, all internal security, all internal things are compromised. It does not matter if WhatsApp, Telegram, calling, history, all recordable. The second thing I want to talk, sir said financial fraud काफी हो रहा है. I know financial fraud काफी हो रहा है, this kind of thing, बैंक से कॉल आता है, but how? क्यों आता है? What is the leakage? Where is the leakage? Who leak your data? So whenever you visit restaurant, coffee shop, and the grocery store, so salesman and the manager ask for the number. Sir, what is your number? Offer मिलेगा. So offer नहीं मिलेगा, वो number किसी और को मिलता है. Some kind of bad guys. So after the mapping of the record, so your mobile number is associated with your bank number, your Aadhaar number, your PAN number. So already we can identify आपका मोबाइल नंबर कहाँ अटैच है. तो आफ्टर द मैपिंग डेटा बनता है, रिकॉर्ड बनता है, उसके बाद डेटा को सेल किया जाता है, देन दे स्टार्ट कॉलिंग. So if you want to avoid this kind of thing, you have to purchase two number, एक major, एक minor. Now you have to and you have to select which ones you have to provide into bank and which one you have to provide to public. Second thing. So zero trust security architecture, ZTA, lots of people are, government of India also thinking to implement ZTA. So for my opinion, real meaning of a ZTA, only count on ourselves. खुद पे यकीन करना, किसी पे यकीन नहीं करना. This is the reality of the ZTA, zero trust architecture. The technical meaning ZTA architecture is built to enhance current security framework, to monitor, authenticate, authorize all end users on the same network, to mitigate the risk, tool and the technology, and protecting your data, and easily identify the unauthorized access. So this is the real technical meaning of the security architecture. But in India, if you want to implement ZT architecture, so we can be fail, because ZTA के लिए we need 100% indigenous solutions, but we have the lack of the options. So if without indigenous solution we implement this kind of ZTA architecture in India, a blind spot remain this kind of the architecture. So that kind of blind spot help the hacker to identify, gather your technical frameworks, your security framework easily. So that kind of incident we already seen AIIMS institution attack. There was a blind spot. जिसका सारा हैकर ने लेके, तो we already seen the result. So due to lack of the options, we have to move for the 100% indigenous solutions, step by step. Without that, very hard to protect.
Nothing is 100% secure. If you want to protect your security framework, you should be strong your monitoring thing. If you want to identify this kind of blind spot, your programming, your forensic things, and lots of other things should be well versed with a technical team. So due to lack of the options, we have to be strong, these kind of thing. So now I have to finish my talk. If you have any questions regarding this, I'm here. I will answer you. Thanks once again to inviting me and thanks for that. I'm use iPhone, but I have complicated thing. I have two iPhone. I use with SIM. Second, I'm use without SIM. One is public को दिखाने के लिए दूसरा है, and the second private for the without SIM. So I have some technical thing जो without SIM को कैसे use करना है. So that's why I'm used. For Android, I'm not trustable because lots of people are saying is Samsung S20 is not hackable. But recently we had. Good afternoon, sir. My name is Ayush Jindal. I have a query here. So in the beginning of your talk, you just said Android, you shouldn't use Android, but you use an iOS, right? So why didn't you say iOS and Android both are not safe? As in, why target Android? Mhm. Why is the a big no to Android? No, Android, a big no for the Android. Yes, I'm why? a big no for the Chinese based Android. But sir, iOS mobile phones are also developed in China, right? No, only hardware, no software, Again, it's debatable. no debatable. As in, you just in your talk you mentioned that no antivirus is providing 100% security, right? Yes. So, in today's world, Mhm. at the maximum possible stage, Mhm. what's the most secure software, or what's the most secure method? Secure method, only your only monitoring thing. You should be monitored. You should be protect yourself if you for only awareness thing. If you are in the technical field, your team should be aware. You have implement something somewhere, so you have to monitor. क्या आया क्या गया? What is authorized? What is authentication? Implement work. So as a मैं hacker के उससे बात करूं, so rather than bypassing a technology, is easy to bypass a human. Is easy एक human को hack करना technology rather than technology काफी easy होता है. So technology mistake नहीं करेगी, human technology के साथ mistake करेगा. Okay, I want to add something. For information of you, because you said Apple. First of all, everything is under risk. Yes, sir. Fundamentally, why? So this net was developed by somebody called Mr. Warner or something like this. I met him 3 times in the world. He is the most painful person today in the world. He says, I have never made internet to be used in this way. Internet by design is, आप रह रहे हैं एक बगीचे के अंदर एक बेड बिछा के, कोई भी कहीं से घुस सकता है. एक तो ये बात है. एप्पल का सॉफ्टवेयर बनाना R&D सब अमेरिका में है, मैन्युफैक्चरिंग उसको वहां से करके वो दुनिया भर में करते हैं, चाइना में, इंडिया में भी करते हैं. बट हैविंग सेड दैट, बहुत अच्छा कहा था जितेंद्र जी ने कि ये हमको कैसे सेव किया जाए. एक तो इन्होंने फॉर्मूला बताया कि अपने फोन में एक ऐसा कार्ड डाला जिसमें अकाउंट में पैसा ही नहीं है. हमारे दफ्तर में कुछ पेमेंट हम ऑनलाइन ही करनी पड़ती है, जीएसटी वगैरह की, तो मेरे अकाउंट में 0 बैलेंस होता है. जब पेमेंट करनी होती है 10 मिनट पहले पैसा ट्रांसफर करते हैं, फिर पेमेंट करते हैं. एक तो फॉर्मूला इनका ये है. दूसरा इन्होंने बताया कि 2 फोन रखे हुए हैं. जितना आप लाइफ को इजी बनाने की कोशिश करोगे, उतना आप लाइफ को कॉम्प्लिकेशंस की तरफ ले जा रहे हो. मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि आपको सुबह से शाम तक 50 जगह पेटीएम से पैसे देने हैं. मैं तो कभी पेटीएम यूज नहीं करता, और मैं
काफी ट्रेवल करता हूँ और काफी इन्वॉल्व रहता हूँ, पैसा निकाल के दे देता हूँ, बात खत्म हो गई। आज भी मैं पेमेंट भाई चेक करता हूँ 90%, मैं नहीं भेजता आरटीजीएस, पता नहीं कब कहाँ खतरा हो जाए। तो ये एक बताना था आपको। दूसरा एक और बात बतानी थी, मैंने आपको रावण का एग्जाम्पल दिया था, उसमें एक और भी चीज है हमें समझने के लिए, जिसमें रावण खुद बेवकूफ बन गया। वो क्या है बताओ, उसी एपिसोड में। सर उनकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक की गई थी थ्रू सोशल इंजीनियरिंग। अब रावण का जो वीक पॉइंट था वो उनके फैमिली मेंबर्स को ही पता, दैट इज सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। नहीं, मैं उस पर नहीं था, मैं था सिर्फ सीता को ले जाने के एपिसोड पर था। ओके, उसकी हम भी हम साइबर की बात कर रहे हैं। राइट। एनीवे, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रावण जो खुद इतना बड़ा साइबर एक्सपर्ट था, और वो जो भी उसने डिस्कस किया, ये किया वो किया, जब वो लाइन को क्रॉस कर रहा था तो क्रॉस नहीं कर पाया। रावण जैसा बुद्धिमान आदमी भी ये समझ नहीं पाया कि यार अगर मैं इतना सारा संसार जीत के आ सकता हूँ, सबको जीत सकता हूँ, लाइन क्रॉस नहीं कर पा रहा, तो कुछ तो कहानी है जो मुझे नहीं पता है। यही मैन मेंटेलिटी है बस। थैंक यू। Mike, thank you very much, sir. In fact, we have other sessions also. We'll be having a lot of questions in those sessions also. Thank you very much, sir, for sparing your time. And Kushalji, this is just the beginning. We wanted to have a whole day workshop with you for the industry, and also with Professor Goel Saab and Colonel Abdul Hamid Saab. Thank you very much. And as a token of gratitude, a small memento from PhD chamber side, sir. Speakers of technical session 2 to kindly come on the dais. I'll request our co-chair for Law and Justice Committee, Mr. Kirit, to kindly come on the dais. Mr. Pankaj Anup, Mr. S.K. Sethi Saab, and Mr. Paramjit Vasan. Kindly come on the dais.
Start. Good afternoon, everybody. Welcome to the second session. We had a very interesting first session and enlightened us from practical perspectives. And especially in the last speaker, how usage of mobile phones, and I myself was not aware that Android feature, most users of Android phones are susceptible to cyber threat. Though I don't use the Chinese version, but yes, we were all aware of these issues, but that was rather interesting. In this session, we are now going to talk about how the corporate companies can develop strategies to minimize and mitigate risks from a cyber crime and cyber securities. It is very essential for most companies, I'm sure, in this day and age, since we all are round the clock on our devices, on the computers, and everything is so integrated electronically. A lot of companies, the top-end companies, especially, would be having cybersecurity policies and guidelines, which are very important for every company to draft and follow these practices. The challenge is not for the big companies, the challenge because they have the financial powers to upgrade the systems and develop the best practices. The challenge is for the SMEs, because they are the ones who are trying to grow. They are also integrated, but they don't realize that they are probably on a weak wicket when it comes to developing their IT systems. So on a personal level, we all have our own challenges with the banking or on your mobiles, but probably when you are a startup or your SME, depending on the sector, whether it's fintech or IT or certain sectors, I think that is where the challenge is. And they are the most vulnerable space, and that is where these cyber criminals are now targeting SMEs as a large community. And that is where a lot of impetus has to be given to see that they're taken care of. Apart from that, the routine issues are obviously every company will have to see that the system and processes and passwords are changed time to time. Issues with your vendors, whether vendors, third-party vendors are having the best cybersecurity practices, data, and so that it does not have any impact on your services. And then staff training should be given on a regular basis. So these are things which we will discuss in this session. And of course, the incident response plans. What happens if something goes wrong? Do we have some plans in mind? So all these things which we will need to discuss, and we have experts sitting here. I'll start with Mr. Amit Dubey, the first speaker. He's not there. Sorry, my apologies. Mr. Pankaj Topo was the policy program and research with the India Future Foundation. Mr. Pankaj is presently the head policy program and research with India Future Foundation, a not-for-profit think tank that works towards making the virtual world a safer place, especially for women and children. In a career spanning 25 years, Mr. Topo has extensive experience in the field of content generation, public policy, and has worked with organizations like Outlook Publishing and Knight Frank India in the past. At India Future Foundation, Mr. Topo looks after matters of public policy and research. During his professional career, Mr. Topo has authored many white papers and research papers in areas of real estate and water. Thanks largely to his professional stints in different sectors, Mr. Topo has knowledge in varied fields like personal finance, real estate, development sector, environment, economics, technology, and print journalism. Mr. Topo has a bachelor's degree in history from College of Vocational Studies, University of Delhi, and is a management graduate from the Indian Institute of Forest Management, Bhopal. Welcome, Mr. Topo. Over to you. Thank you. Thank you, sir. Most of us would have remember the ad which had a tagline, "Ek tapakti boond aapki kismat badal sakti hai." Same goes for cyber as well. One small mistake and the deal is done. So it doesn't matter what size of an organization, how small or big an organization is. The weakest link in any cyber security processes or anything is the human error. The one error by a human being, they are like before me, one of the panelists had actually said the technology doesn't do anything wrong. It's the human error that causes whatever damage needs to be done. So the first thing in any cyber processes or cyber security plan
is to train and educate the human personnel of any organization, be it small, big, no matter irrespective of the size. It's more important to train, educate, tell them about the processes, what they need to do, what they can do, what they can't do. That's the most important thing that needs to be told to them. And more so, after having been told, it's also important for them to abide by what's being taught, and it needs to be updated regularly so that the skills are upgraded. That's the most important thing for any company to do, irrespective of the size. Like I said, size doesn't matter in the field of cybersecurity. Even the smallest of organizations can create, when infected, can create a lot of problems all across. And that can impact a normal human being, a man on the street. For example, the AIMS attack. Who would have thought a common man going to the AIMS hospital could have been attacked, could have been impacted by the attack? But it did. So there are few things which organizations need to do so that they are cyber safe. More importantly, they maintain a proper cyber hygiene, cyber posture, whatever you may call it. And these are simple things. But as it said, the simplest of things are the hardest to follow. One of the most simple things that organizations need to do is have a proper backup plan of the data, which means they need to regularly take a backup of the data and ensure once they take the data, they should also regularly keep checking that the data is what the backup that they have taken also works. It's not that when once in a while they take a data, they should take the backup regularly, check it, and ensure that it works properly, just in case the data needs to be recovered in case of an attack. The incident response time shouldn't be more. It should be very less, in fact. The second thing, the systems and softwares that these organizations use, they should be regularly updated for patches. In many cases, it has been seen that the attacks typically happen because softwares are not updated. So that is one area where they needs to look at. The second thing is whatever data needs to be sent through the network, it should be encrypted to the key so that only those persons for whom the data is meant, only they can access it. This also means that any unwarranted access to the data is very, very limited. The other most important thing which is there, most of us would be logging into our Gmail accounts from say our home computers or say from our office computers. We would have seen if we log into our Gmail from another machine, the machine asks for a double factor authentication. That is one of the most important things which we need to make use of, because multi-factor authentication protects us from cyber attacks in most of the cases. So adopting those things would also help. The second thing is having not only strong passwords, rather than having strong passwords, one should have paraphrases, because those are difficult to crack. This is in addition to this, the multi-factor authentication also comes in place. The other thing is one should have security policies in place. And this is what I meant when I started off by saying one should educate the personnel who are working in the organization. They should know what they can do. They should, more importantly, they should know what they shouldn't be doing. That's where the key to a safe and a proper cyber secure posture remains. Thanks a lot, sir. Thank you so much. Thank you, Mr. Topu. Just had a question, but we'll ask you after the other panel speakers finish. Thank you. We next have Mr. Suresh Sethi. He's the founder and chief executive officer, Insurance Foundation of India, and founder and director of RIA Insurance Brokers Private Limited, an IDA-approved insurance brokerage firm headquartered in New Delhi. Mr. Suresh has been the vice president director of Insurance Brokers Association of India from 2004 to 2013. He held the position of co-chairman of Insurance Committee of PhD Chamber of Commerce for many years. Now he's holding a position of co-chairman of Banking, Financial Service and Insurance, PhD Chamber. As a recognition of his contribution, he joined the advisory board of the Economic Times Insurance Summit held in Mumbai on October 31st, 2014. He's on the panel of global consulting firms and has provided consulting to foreign institutional investors, foreign insurance companies, VC funds, PE funds on market and growth potential of health insurance, as well as entry in the Indian market. He's the author of The Best Guide to Buy Health Insurance, which has 2,047 pages and is now available on the website, healthinsuranceindia.org. He has presented papers in various national conferences on health insurance. His views are covered in reputed publications like the Main Business Week, Business Today.
He's also the founder of Insurance Foundation of India, a not-for-profit organization engaged in spreading the message of insurance among masses and stands for introduction of simple policy language in regional languages. He's also the author of One Cyber Attack Can Ruin You Forever. One Cyber Attack Can Ruin You Forever. Insurance fraud must be controlled. India needs Insurance Fraud Control Act. Over to you, Mr. Sethi. Thank you very much for the introduction, and the purpose for which I am in front of you is, which came towards the end of it, that I am the author of One Cyber Attack Can Ruin You Forever. When I was selling cyber insurance to different corporates and I was interacting with the people and all that thing, what I realized was that the people were very, very defensive and all that thing. And that is, they said that we do not need cyber insurance because in case the IT had accepted in front of his boss that cyber insurance should be taken, then it is that he's accepting that and I am accepting defeat. That is, I have not been able to. And then it is that I started working on it, and over a period of time, might be, I had 2,200 pages of information on this topic. And then being guided by the publisher, I was told that go on reducing the number of pages and all that thing. So ultimately, I came out with a book which is being given to all of you, but I will show it to you just now. We are giving you this book so that you can read it over a period of time and all that thing as and when the time is available, and you will benefit from it. Some of the points have been covered by the speakers, and I will not like to repeat those points, and that is, but in the first chapter, I wrote about the technology, and that is how the technology has taken, and mobile phone is the best example, which has now assimilated so many things. Fax machine, camera, digital diary, so many things are now part of our mobile phone. And that is the strength of technology. But as one of the speakers said, that when you're using it for your convenience, then it is that you have to take risk, and that is what is cyber risk and all that thing. So these points are more or less covered by other speakers, so let us skip to the other one. These photographs are of some of the real big CEOs of the world, that all the three companies were from USA. CEO of Yahoo, CEO of Target, CEO of Equifax. They were also having IT heads. High profile vice president IT and all that thing were there. They were having access to all the Norton antivirus and that antivirus and all that thing. You cannot imagine that none of these companies was having all those they were having. But what happens is that the hackers are always ahead of others. And these hackers, I am very widely traveled, but most frequent my visits were to Moscow. And Moscow is the place where for 7 months, the whole thing is covered with snow and all that thing. And these youngsters who are sitting inside their homes, they are the ones, instead of developing software for banking for being supplied to USA,
that is their brains started working in the direction of hacking. And the most of the hackers which originally were emerged out, they were from Moscow. Even today, they are from Moscow. There are others also, but Moscow is still that place. They are the ones, and when there is complete snow is there and all that thing, and that is, they are the ones and who are working, who are sitting at the weekend in their homes and all that thing, and they are working on it. And they come out with hacking ideas and all that thing, and they implement it. So in today's world, most of the hacking which takes place, it originates from cities like Moscow. And when these three companies were shut down and they had difficult time, and when the whole thing was back to normal, the directors of these companies, and that is individuals separately, they decided that you as the CEO were responsible for taking care of the IT systems, and it is your failure that we were hacked, and you have to be out. So this is what it shows you that this is where India is a very safe place to work. Here it is that you have to just locate someone who is a junior enough and make him a victim and throw him out. No CEO in India has been thrown out or penalized because his company has been hacked, and it will not happen also. हम हमेशा ढूंढ ही लेंगे किसको विक्टिम बनाना है. Yes. This is one of the main thing which has been a part of this book, and you will find it something like page number 372 is there, where it is that I have come out with SETI concept of IT budget. What I find is that these IT heads, when they are in front of the CEO for the budget approval, that is, they talk of few things, and that is enough. They talk of hardware. They talk of software. They talk about how many more persons are needed. And chota mota hua tha, and that is what security that is. Let it be very clear that hardware is hardware. And now I am picking up some of the points from my colleague. See, what happens is that in India, habitually we are in the habit of owning the assets. And owning of the assets is that the managing director will be having the most modern model on his table, which he uses for 4 minutes in a day. But he has to keep it in front so that when you go to meet him, and you should be impressed. MD Saab. The other person will be, and if you will go into that complete lane, the accountant or the purchaser will be using a model which is 11 years old. क्योंकि asset एक बार आ गया है, we don't have any thinking on it that there is something, and that is if it has become obsolete. Those who are very much connected with IT, you will realize it that in case you are having obsolete hardware, you cannot load modern software on that, and in case it is the other way, vice versa. So it is that you should have some policy on what hardware you are going to have it. I had opportunity of dealing with the best of the companies in the world because I was in projects and interacted with the big companies like Xerox and Olivetti and Telstra and all that thing. In those companies which are flush with funds, they do not buy computers. They always lease it. They take it on rental, and they have the order that 5,000 employees are to be given computer of this specification with this software and all that thing for a period of 3 years. They can also have it. We are in that era. Some of you, most of you are very youngster, but those who are from that is हमें तो depreciation का फायदा जरूर उठाना है income tax के लिए. Depreciation, that is, and we are having obsolete computers.
with software which is not being supported by the software developer now. And we are inviting trouble. And that's the way we run our business. Software, again, it is like that only, that you should have modern and all that thing. If the software developer is not supporting the software, better to switch over to the right one and the new one. Manpower, covered up that manpower, whether he's in IT department or people are in the user departments, that is, they should have training, that is how to keep it. I find a very funny thing that people are having in their service contract that in the event of resignation, you will give 3 months notice. The person who has resigned, now he is not at all committed to your organization, and you are asking him to sit in your offices where he cannot take away the information and all that thing, or he can pass it on all that thing. That is, no personal email or Gmail should be permitted on the official computer. It is not permitted in US companies. You cannot, that is. You have to have your personal laptop for using that and all that thing for that one. Here, it's all as that is. And pandemic has brought something that from very protected and all that thing, we permitted our employees to use and work from home, from their laptops. And we opened the whole thing. In case you are having so many devices being used, the weakest and the oldest, or the that is one which will affect you, and that is, and can result in. Now, these are very normal things and all that thing. So what the concept I have introduced is that you should have the ability of cyber consultant who will look at your system, software and all that thing and guide you on what are the weaknesses in your system. I have taken the idea from internal auditors. If the company is having CFO and chartered accountants and all that thing, then internal auditor is appointed only to look at it, that where there is a violation by the accounts department or the CFO. The same thing should be here, that we should have the cyber audit done by an outside agency who can point out that what is going wrong with you. And then it is that one of the point is coming on the training and all that thing, which is, and I have covered it up, that encourage your IT team to participate in the technical conferences and attend the trade shows to know what is new and what is applicable and how, and it will give a benefit to the organization. Cyber insurance comes much later on, which we are in the business of selling. In case you have taken cyber insurance policy and you are using obsolete software, if you are using pirate software, if on your computers your employees have uploaded astrology software, which is pirate version, is available in narrow place for 100 rupees, then it is that you have violated all the conditions and do not expect that insurance claim will be paid. There is an instance of an Ambala company where they had the cyber insurance and they had 28.5 crores claim, but most of the software on their computers was pirate. As a result of that, that claim was not allowed. So one has to have optimization of these things, and then only one should have cyber insurance. And now, for information of you, we are a large country. We are going very soon to be $5 trillion and $10 trillion, and that is all that is. Number of insurance policies sold in this country is only 3,000. Only 3,000. Nobody is ready to buy it because it is complicated, and some of the reasons can be because I'm getting signal for making it to the point and all that thing.
that one of the condition in the cyber insurance policy is that retention amount is 25 lakhs rupees, or now it has been made 15 lakhs rupees. It means that the claim, when it will be lodged, first 15 lakhs rupees are to be paid by the insured. And people say that why we should buy a product where first, that is on the one hand, we are paying the insurance premium, and when the loss occurs, then we will be asked to pay first 15 lakhs out of our pocket. So that's why we don't buy it. So that's the reason that it does not. It's a very complicated product where it is that companies, they are using, insurance companies in the world are using 35 different policy languages which run into 45 pages, 55 pages. And for the buyer to buy it, that is, they have to have the team. And it is suggested that in case one is considering cyber insurance, then in addition to your IT, you should have other people, that is legal person, accounts person, all that thing, part of the team which discusses with the insurance brokering firm for buying the right product with right specifications. And we, being insurance brokerage firm, we are available for that one. With our specialization, we are ready to give. There are different, and that is an coverages which are very elaborate ones and all that thing. You can read it anywhere. That is. And different claims can be there. One of the main claim which is that is paid by the insurance companies in this one is where the forensic studies are to be done, and that is all paid by the cyber insurance policy. There's a major task that when the loss occurs, then you may have to inform all your customers and all that thing as a part of PR or advertising to inform them that this loss has occurred and you might be the affected person and all that thing. So that advertising cost and all are, they are all part of this cyber. So in short, it is, while cyber insurance is very much required, but it should only be bought when one has done the proper IT planning, one is having the right people, motivated people, right hardware, right software, right cyber security the software and all that thing, then only one should buy it and one should protect one's business. Otherwise, huge losses can occur, which can bring down. And AIIMS is the example which was mentioned. But imagine in case airline is, the whole system is hacked, all the planes will be on ground. They cannot take off all over the country or even internationally. If some planes are at that time in Germany, even they won't be able to take off. So what can be the losses? So losses can be huge. So therefore, protect yourself, have the right combination, including cyber insurance, to protect your business. Thank you. Thank you, Mr. Sethi. That was very enlightening. I'm sure we'll have a lot more to learn from your book. Thank you so much. We now have the third speaker, Mr. Paramjeet Singh, who's working as Secretary IT at PhD. Before joining PhD, he was working with IGNCA, New Delhi, as IT specialist. He has done BTech IT and MTech in computer science. Mr. Paramjeet Singh. Thank you, sir. Before we get into this, there is one word that we heard most, and it was the data. Actually, data is that we hear most, right? So there is a quote from a company named Google that if data is a new currency, then sharing it is a new way of charity. Right? If a company like Google is saying that, it means the data is really important. So first, we can see what is the statistics of data that we are generating in a day-to-day basis. So here is a snapshot, like 4 to 5 petabytes of data
on a Meta platform. Meta platform that combines the Facebook and WhatsApp and Instagram. So in 1 petabyte is equal to 10 lakhs GB. So you can imagine what kind of figure we are generating using these applications. And the next is into Google. If we talk about Google, it's like 20 plus petabyte of data is processed by Google in a single day. So you can imagine what what's the huge branch of Google, that is a YouTube. And in a YouTube, in a single day, 3.7 million videos are uploaded. Right. And next there's one more tycoon, that is Twitter. In a Twitter, 500 to 700 million tweets per day. So this is the length of the data that we are talking about. Means in a single day, these bunch of companies generating this type of data. And so the cyber security is actually how we protect this data, right? So next, what are the different types of cyber attacks on the industry? The first one, the leading one, is the ransomware. Ransomware attack. It is the leading one. It is a 21%. It's the data from last year, and this year I think the amount is much. It's just double, and it is following by the server access, then email compromise, data theft, RAT, misconfigurations, insider, and others. So these type of attacks that we are facing in the industry. And next is how we overcome these attacks. Like, what are the strategies we can use to to limit these attacks? We cannot 100% secure a organization, but at least we can secure so that our organization to be in a safer side. So the first one is to create a culture of cyber security. Like, we have to do more programs like workshop like this to educate our employees about cyber security and all that. Second one is like perform vulnerability scanning. Like, each organization have different type of applications, like many websites and applications. So we have to do the vulnerability scanning, IT audits. Before auditing, we should not launch a website and all that. And third one is update and test your incident response plan. Most of the organizations don't have the incident response plan, but those which have, these are not updated. It's outdated. But the the cyber guys, the hackers, they use the latest technology, but the incident response plan is not that updated. So we need to update it on day-to-day basis, and as well as test that plan. That is most important. Next one is the conduct vendor due diligence, and this is the most important. Like, suppose if a company is following all the IT, practice all the IT thing and all the if it follow all the IT framework and it's up to date IT equipments, but the vendor, the third party vendors through which it's working with, that vendor is not up to the mark, that security of that vendor is not up to the mark, then that's the threat. So we must conduct the vendor due diligence. And next is the utilize multi-factor authentication. Sir, I already mentioned that. Next one is monitor your entire infrastructure. Monitoring infrastructure is a day-to-day practice. It's not a one-time practice. We have to monitor our infrastructure so that we find any loopholes. If there is any, we have to rectify that. And the last one is the secure your endpoints. Endpoints like desktops, like computer system through which we enter our system. इसको ऐसे कह सकते हैं जैसे सपोज एक बिल्डिंग हमने बनाया है, उसमें एक डोर भी लगा दिया सामने आयरन का, उसमें लॉक भी लगाया है, लेकिन बैकयार्ड में हमने एक विंडो ओपन छोड़ दिया. So this should not happen. So if we perform all these strategies, if we follow all these strategies, then we make our organization more safer. Right? That's a submission from me. Thank you.
Thank you very much, Mr. Paranjit Singh. I think anybody has questions from the audience, please? Please go ahead. So one of the things which I think panel, well, with due respect, didn't cover is about privileged access management. So while the users have the best of the breed solutions, right, or the organizations have best of the breed solutions, but if they are using the admin privileges to log in all the time, right, most of the SMEs, what I've seen is that they have procured laptops, workstations, and everybody is using the default admin credentials to log into the machines. So that is one of the major things which is leading to the installation of any malware, ransomware, and all those things. And so if you control the privileges at that layer itself, you know, control the privileges and the accesses at that level, so that will reduce the number of incidents to the greatest extent. That's my submission here. So it's a continuing cyber security practice which is required at every level, not just at the top level. So that every organization has to follow that religiously. Absolutely. Yeah, thank you. Sir, can I add? Please. The other thing is access to the sensitive information specifically in that organization. That access needs to be given not to all, but to the few who actually need that access. That's the privileged access management. Yes. Sir, I would like to mention that the banking industry is having for quite some time that a person must go on leave. Must go. Right. And during that leave, he is not allowed to come back to his branch. He cannot enter it. Because that is a time when whatever blunders he is doing are get exposed. This Nirav Modi case got exploded only because that person was on leave. Otherwise, that would have been going on for years and all that thing. So it is that in the case of IT also, and one has to do it. And have you used AnyDesk? AnyDesk software? Computers installed with 12 different brand names and from that is, and किसी का AMC किसी के पास है, किसी का किसी के पास है, and in the evening at 5:30 अरे हमारा ऑफिस बंद हो रहा है, वो मेंटेनेंस वाला आया हुआ है, तो पियोन को बोलते हैं कि भाई है ना कि ये जो है ना जब इनका काम हो जाए तो है ना तब ऑफिस बंद करना. During that time अगर AnyDesk के ऊपर वो कनेक्ट हो जाता है किसी के साथ, in 5 minutes data is gone. What risk we are taking? CEOs of the company, they don't realize it है ना कि वो किस टाइम बॉम्ब के ऊपर बैठे हुए हैं with faith on the IT head. It is very risky, very risky. And to that, I would like to add one. I'll just take one more minute. So there was a case study, sure most of us would have gone through it. The Nick Leeson, that's the stockbroker based out of Singapore, and he conducted a trade. Basically, he misutilized his privileges or the privileged accesses, and that resulted in the selling of Barings Bank for £1 in the year 1995. That's right. And that's a classic case study in this, corporate management. Thank you. We are short of time. One last question, please. I think in India, we have got a big problem of server. Our servers be not here. We use the USA based server. That is a big problem. I'd write, maybe IT person are right to want to answer it, but it is that India has gone ahead with setting up lot of server bases, and you are near Noida, which is emerging out to be a very big base for Indian servers. Very big base. That is, we have to be proud of Noida, that what they have achieved, that is. Thank you. Yes.
Subhanpur, I'm from the chamber. Sir, I'm very much from the chamber. Thank you. Thank you very much. We wind up this session. We move on to the next session now. Thank you, all the panelists. It was very enriching. Thank you. इसको बुक को भी ले लेते थैंक यू just copy it on Can we have the speakers for the third session, please? Mr. Dubey, Deepak Kumar. Waiting for them. आगे जो यूनिक है उनका है ना ये May I, Mr. Dubey, Mr. Amit Dubey and Mr. Dr. Deepak Kumar. Please come. Good afternoon once again. We now have a final session. We've had some interesting observation in the first and second sessions on what entails cybercrime and where we are in India and generally what impacts corporates and individuals. We now move on to the little more technical session on the third session, which talks of cybercrime in the digital ecosystem, legal issues concerning detection, investigation, and prosecution of cybercrimes. I think this is a very important component, and to understand how does the system works in terms of investigation, in terms of filing a complaint, in terms of who do you approach, what are the remedies, and what are the agencies which need to be approached in times of any cyber attacks. Because we heard in the previous session, the prevention of how these attacks can be prevented. Those are different methodologies, but in terms of when the situation has already happened, what do we do and what steps we need to take is very important. No doubt that the developments in the world of information and communication technology has paid dividends to the humanity in various ways. As much as we find the mobile and internet, which has simplified our lives, but it has made it equally very complicated and vulnerable. We live in a very challenging world, and I think all of us are glued to the mobile from morning till night, from the age of 8 to 80, and it's like a virus in reality. Even with no message, you will see the phone every 5 minutes. I think everybody suffers from that, and that's a different aspect.
In the year 2012 to 2018, there had been 90,000 cybercrime incidents registered in India, out of which 27,000 cases were registered in the year 2018 alone, making an increase of more than 121% since 2016. Such an increase in the number of cybercrimes could pose serious economic and national security challenges. As per 2019 Norton Life Lock Cyber Safety Insights report, 63% Indians do not know what they will do if their identities are stolen. Even though 70% are worried that identities will be stolen, 4 in 10 consumers in India have experienced identity thefts. The cybercrime field has been evolving with time and it has brought in more complexity. The policing and investigation of content on social media poses a huge challenge. The law enforcement machinery is facing a huge challenge in keeping a tab over the developments on social media. Some of the information on social media has the potential to cause huge law and order disturbances, as was experienced in Kashmir and a few other places. We've heard about what the various cyber crimes are: ransomware, child pornography, abusive material, cyber stalking, online job frauds, phishing, cyber squatting. All these are resulted in cyber crimes, and which the government has taken steps. We got the Information Technology Act in place, though of course these crimes keep evolving. The acts are not necessarily tuned all the time. Amendments keep taking place regularly. Due to the IT Act, certain provisions of the Criminal Procedure Code and the Evidence Act have also been amended. Along with this, new regulations had been enforced by the Indian legal system to meet the need of cybercrime investigation. I think the challenges are that we don't have too many trained cyber investigators. Cyber forensic facilities are coming up. No doubt the government has beefed this up, and I'm sure our experts in the first panel had thrown some light on that. There are now the CERT and there are Delhi police bodies and cells, cyber cells across the country in different states, which look up to this tackling with cybercrime and registering complaints. So I'll just give a little brief on who can investigate. The power to investigate the accused with regard to cyber crimes has been entailed in the IT Act. It says that notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, a police officer not below the rank of inspector shall investigate any offence under this Act. So this power is given to the inspector to register and investigate the cybercrime like another crime. Yeah, the body which I was referring to of the Delhi police was IFSO, Intelligence Fusion and Strategic Operations of the Delhi police, which functions under a special cell and is a specialized unit that handles all complex and sensitive cases of cybercrime, including those in which victims are women and children. The cybercrime unit is equipped with a state-of-the-art cyber lab having cyber forensic capabilities such as extraction of deleted data from hard disks and mobile phones, imaging and hash value calculation, forensic servers, portable forensic tools for on-site examination, facility to extract data from latest Android and iOS phones as well as Chinese phones, to reiterate your point. Where do we make a complaint? When we make a complaint, either we can make a complaint through email or through social media. There are certain steps which have been given on the Delhi police site, in the cyber cell sites. So I won't take much time now. I'll have the two speakers explain in more detail on this subject. Over to you, Mr. Dubey. Thank you, Mr. Kirit, and thank you everyone for having me here. It's always pleasure to speak in front of such a diligent audience. मैं भी हिंदी में बोलूंगा तो कोई दिक्कत है किसी को? Thank you. क्योंकि मैं शो हिंदी में करता हूं और जब तक हिंदी में मैं नहीं बोलूंगा मेरी बात आपके दिल तक नहीं पहुंचेगी, दिमाग तक तो पहुंच जाएगी। आप सबके हाथ में फोन है, उसको खोलेंगे, ब्राउजर ऑन करेंगे और उस पर एक वेबसाइट खोलेंगे मेरे लिए। प्लीज वेबसाइट पर लिखना है privacy.net/analyzer, privacy.net/analyzer। जैसे आप इस वेबसाइट को खोलेंगे, वेबसाइट खुल जाएगी। कोई मेरे लिए लैपटॉप पे खोल दे तो parallelly, can somebody try on this? लैपटॉप पे खोल दो जरा, ब्राउजर खोलो इसको।
या वो कीबोर्ड यहाँ तक आ जाए तो मैं खोल, सो दैट एवरीबॉडी कैन सी। उसको जब स्क्रॉल करेंगे वेबसाइट पर तो नीचे एक बटन आएगा स्टार्ट टेस्ट करके, आपने वो स्टार्ट टेस्ट क्लिक कर देना है। privacy.net / analyzer, ANALYZER एंटर। इसको पूरा फुल स्क्रीन कर लो, स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन करो, या स्टार्ट टेस्ट बटन क्लिक करो। जैसे ही इन्होंने स्टार्ट टेस्ट बटन क्लिक किया, इसने कुछ इंफॉर्मेशन चुरा के सामने दिखा दी। ये जो भी इंफॉर्मेशन दिखा रहा है ये वो इंफॉर्मेशन है जिसके लिए आपकी परमिशन नहीं मांगी गई, और ये वेबसाइट मैंने नहीं बनाई है, ये कोई भी बना सकता है। सो जो भी लिंक आप खोल रहे हो डे टू डे, दे कैन कैप्चर एटलीस्ट दिस इंफॉर्मेशन इन एनी केस। क्या है इंफॉर्मेशन? योर आईपी एड्रेस। जितने साइबर क्राइम हम सॉल्व करते हैं, पता उसमें सारी जद्दोजहद क्या होती है? क्रिमिनल का आईपी पता करना। जैसे ही आईपी मिल गया, केस खुल गया, उसके बाद तो हम उसका जन्म कुंडली खोल देंगे। आईपी जैसी दिखा, लोकेशन दिख गई आपको दिल्ली। इंटरनेट कौन सा यूज कर रहे हैं? आपके केस में वोडाफोन, रिलायंस, बीएसएनएल, जो भी आप यूज कर रहे हो दिख रहा है आपको? यस, नो? हाँ बोलो भाई, सबके सामने एक्सपेरिमेंट हो रहा है। यहां पर ये श्याम स्पेक्ट्रा का वाईफाई चल रहा है। किस डिवाइस पे खोला? एंड्रॉइड पे खोला, आईफोन पे खोला, दिख रहा है आपको? आईफोन होगा तो आईफोन दिखेगा, मैक ओएस, विंडोज है तो विंडोज दिख रहा है। ब्राउजर का वर्जन 113, रेजोल्यूशन 1366x760 है, लैपटॉप बैटरी 100% चार्ज। इन योर केस इट वाज शोइंग यू कि आपकी बैटरी कितना है। इसमें से हर इंफॉर्मेशन आपके अगेंस्ट यूज हो सकती है, एवरीथिंग। अभी 3 हफ्ते पहले गूगल करना जी बिजनेस पे हमने एक कैंपेन चलाया। क्या कैंपेन चलाया? मेरे ख्याल से जब स्टार्टिंग में कोई सेशन चल रहा था तो उन्होंने हिंट भी दिया इस बारे में कि जो ये इंफॉर्मेशन आपकी कैप्चर होती है, ये कैसे आपके अगेंस्ट यूज होती है। ओला और उबर के खिलाफ हमने कैंपेन चलाया। ओला उबर में भी आप एंड्रॉइड और आईफोन रख लो सामने, और मैं यहां पर पीएचडी हाउस से अपने घर का फेयर कैलकुलेट करूं तो एंड्रॉइड पे हमेशा वो 15-20% ज्यादा बताएगा, सॉरी आईफोन पर, और एंड्रॉइड पर कम बताएगा। ये हमने 50 बार टेस्ट करके सामने टीवी पे दिखाया। फिर यदि आपकी बैटरी 20% चार्ज तो वो फेयर बढ़ा देगा। यदि सेम टाइप का फोन, एंड्रॉइड ही फोन है, 80% चार्ज है तो कम कर देगा। तो ये खेल हो रहा था। ये हमने बार बार किया, आप देखना आपको दिख जाएगा जो एक्सपेरिमेंट हम, और फिर उसके बाद दूसरे दिन फिर किया। ओला उबर को लिखा हमने कि आप ये क्या कर रहे हैं, और ये हमने अकेले नहीं किया, ये यूरोप में भी एक कंपनी ने किया, तो हमने उन्हीं से हिंट लेकर हमने भी हल्ला मचा दिया। अल्टीमेटली उन्होंने मान लिया कि हम ये करते थे। पहले तो डिनाई करते रहे, नहीं हम ये करते नहीं, तो ऐसे है तो तुक्का लगे। हमें तुक्का क्या, हम जितनी बार कर रहे हैं उतनी बार, पब्लिक से बुला लो फोन। तो देन दे फिक्स इट। ये चल रहा है पीछे। आज की डेट में जितनी इंफॉर्मेशन आपकी मोबाइल से जा रही है हर सेकेंड, वो आपके खिलाफ बड़ी खूबसूरती से यूज होती है। आप आज जब गूगल करते हो ना कि कार खरीदना है, उसी समय विश्व में किसी कोने में बैठा कोई व्यक्ति डिसाइड कर लेता है कि इस व्यक्ति को ये वाली कार बेच देते हैं। उसके बाद आप जो गूगल करते हो, जो आर्टिकल देखते हैं, जो ब्लॉग्स देखते हैं, जो कंपैरिजन दिखता है, जो डेटा शीट दिखती है, वो इस हिसाब से दिखती है। उसको आपके बारे में सब पता है, इनकी कैपेसिटी क्या है, बैंक बैलेंस क्या है, पिछली बार खर्चा कितना किया था, पिछली बार के लिए सब कुछ पता उसको सिर्फ डिसाइड करने के यार इसको यहाँ लेके चलते ना, यहाँ क्लोज कर देंगे, खरीद लगाए। उसके बाद आप एनालिसिस के बाद कहते हो कि मैंने एनालाइज किया, आई हैव कंपेयर्ड इट, आई फाउंड ऑल दीज फीचर्स व्हिच इज ऑफ माय यूज, ब्ला ब्ला ब्ला, और ये मेरा डिसीजन है। वो आपका डिसीजन है ही नहीं, वो किसी और ने ले लिया था। दिस इज द रीजन दीज कंपनीज आर हंग्री फॉर डेटा। वो आपका ब्रेन कंट्रोल करना चाहती है। वो चाहती है कल के दिन आपकी हर छोटी से छोटी चीज, आप खाना क्या खाएंगे, कपड़े क्या पहनेंगे, खरीदेंगे क्या, घर के कैसे घर में रहेंगे, आपके सपने क्या होंगे, आप बनना क्या चाहोगे, हर चीज मेरे हाथ में आ जाए। सो वी आर द प्रोडक्ट ऑफ द डेटा दैट हैज बीन फेड टू अस सिंस आवर बर्थ। बचपन से लेकर आज तक जो कुछ भी डेटा हमारे ब्रेन में फीड किया गया, हम उस डेटा का प्रोडक्ट है। और हम सोचते हैं कि ये हम, जबकि आप वो है ही नहीं, आपको बनाया गया वैसा। जो हम सराउंडिंग से सीखते हैं, पेरेंट्स, टीचर्स, बुक्स, न्यूज़पेपर्स, आजकल सोशल मीडिया, टेलीविजन। मेरा जन्म झांसी की बजाय रोमानिया में हो जाता तो आज में कुछ और होता, कोई दूसरी भाषा बोल रहा होता, कोई दूसरे कपड़े पहन रहा होता, कोई दूसरा खाना खा रहा होता, और जिंदगी भर ये लड़ता कि मैं ये हूं। और फिर मुझे कान में कोई बताता, अरे तुम्हें तो मथुरा से ले गए थे चुपचाप टोकरी में भर के, तुम तो कोई और हो। तो कहता अच्छा यार ये कमाल, मैं जिंदगी भर इसको डिफाइन करता रहा। ये खेल है।
हम जानते ही नहीं कि हम कौन है। यदि आपको साइबर क्राइम से बचना है तो सबसे पहले चैप्टर 13 भगवत गीता, जब भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं क्या आप मुझे बता रहे हैं ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, मैं कौन हूं पहले मुझे बताइए। तो बड़ी अच्छी बात उन्होंने दृढ़ दृष्टि विवेका का साइंटिफिक सिद्धांत वो देते हैं कि कैसे अपने आप को आप पहचान सकते हो कि आप हो कौन। दृढ़ दृष्टि विवेका, जिसमें इंटरेस्ट हो जाके पढ़ लेना, और उसके बाद वो जान पाते हैं कि जो चीज हम अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं वो हूं ही नहीं, मुझे तो वो बनाया गया, वैसे मैं तो कुछ और हूं, मैंने तो कभी उसको टच ही नहीं किया। और जब मैं उसको टच करूंगा तब मैं डिटैचमेंट सीख पाऊंगा, देन आई कैन कीप माई सेल्फ अवे फ्रॉम दिस ऑल। क्योंकि चाहे काम, क्रोध, लोभ, मोह, भयंकर, जितने भी वल्नरेबिलिटीज हैं, साइबर क्राइम उसी से हो रहा है, इसके बियॉन्ड नहीं है। पर ये आपकी इच्छाएं, आपके एस्पिरेशन, आपकी कमजोरियां, आपकी हर चीज उस डेटा से ड्राइव्ड है जो आपके सराउंडिंग्स में है, जो फीड किया जा रहा है। एक और एक्सरसाइज करें छोटी सी, प्ले, इसमें खोलो जरा प्ले, जहां से हम एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, प्ले स्टोर, जो गूगल प्ले स्टोर खोलो। यस यस, जो आप बता रहे हैं वो हाँ, मैं तो प्रैक्टिकली दिखाऊंगा अभी थोड़ी सी। ये वो जगह है जहां से हम एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं सर। इसमें फेसबुक ढूंढ लीजिए, मैं एक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस दिखाऊंगा और वो हम सब किसी भी एप्लीकेशन के लिए फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक ढूंढिए, इस पर क्लिक करो, फेसबुक पे, इंस्टॉल पे नहीं, ऊपर ऊपर, हाँ ऊपर, उस पे नहीं, ऊपर और ऊपर, हाँ क्लिक कर दीजिए। नीचे आइए, स्क्रॉल डाउन, नीचे एक ऑप्शन होगा सी डिटेल्स, नीचे आ जाइए, और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे। जब मैं और नीचे कर बात जाऊंगा, डरो नहीं, हाँ बस और ऊपर। ये सी डिटेल्स क्लिक कर दो, ग्रीन कलर का ये वाला। अब स्क्रॉल डाउन करो, और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे, डेटा कलेक्टेड पर रुक जाओ, और ऊपर जाओ, और ऊपर जाओ, ऊपर स्क्रॉल डाउन, डाउन 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 डाउन, और ऊपर और ऊपर, बस बस, थैंक यू सो मच। ये वो डेटा है जो फेसबुक हर सेकंड आपके फोन से कलेक्ट करता है। क्या कलेक्ट करता है भाई? अप्रोक्सीमेट लोकेशन एंड प्रिसाइज लोकेशन, दोनों। और नहीं बोला उसने नहीं कहा कि जब ये मिलता है तो ये करता हूं, जब वो मिलता, ना 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 ना, दोनों ले लेता हूं मैं। सेल आईडी, आईपी एड्रेस, जीपीएस लोकेशन। पर्सनल इंफॉर्मेशन में क्या लेता है? नेम, ईमेल एड्रेस, यूजर आईडी एंड एड्रेस। एड्रेस इज योर घर का एड्रेस। जब आपने फेसबुक पे अकाउंट खोला था, बताया था कि आप लोधी रोड फलाने घर में रहते हो, तभी बताया था। गूगल वो फेसबुक कह रहा मुझे पता है, क्या पूछना? अब क्यों पता है वो आपको पता है, कैसे पता है? 30 दिन में से 25 रातें आप कहां गुजार रहे हो, लोकेशन उसको पता है, तो वो आपका घर है। दिन में आप कहां रहते हो, आपको ऑफिस है। किससे मिलने जाते हो फ्रीक्वेंटली, वो आपका दोस्त है। फोन नंबर। फिर अगली बड़ी खतरनाक लाइन है जिसने पूरा विश्व हिला दिया, पढ़िए। पॉलिटिकल और रिलीजियस बिलीफ, खुल के बोल रहा है कि मुझे पता है कि पिछली बार आपने वोट किसको दिया था, और आप अपने धर्म के प्रति कितने सॉफ्ट, कट्टर, लिबरल हो सकते हैं। मुझे पता है, ये नहीं कह रहा मुझे डाउट है, मैं पता कर सकता हूं, मुझे पता है, आई नो इट। इसके ऊपर एमआईटी में एक रिसर्च हुई आफ्टर कैम्ब्रिज एनालिटिका। कैम्ब्रिज एनालिटिका पता है सबको? क्या पता है उसमें? एंड इलेक्शन मैनिपुलेट करते थे। तो मैं आपसे कह रहा हूं, जब डेटा से मैं आपकी परचेज पैटर्न, आपकी लाइफस्टाइल, आपके सपने कंट्रोल कर सकता हूं, मैं आपको सोचने का मौका नहीं दूंगा। इसमें से कितने लोग हैं जिन्होंने सोचा कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है? बताओ, हाथ उठाओ। क्यों नहीं सोचा भाई? कुछ कमी है आप में? क्यों नहीं सोचा? हमने सोचा ही नहीं कभी, क्योंकि आपको डेटा ने लिमिट कर दिया। आपके सराउंडिंग से डेटा ने आपको बता दिया कि आपकी यही औकात है। ये प्रॉब्लम है, हम सोच भी नहीं पा रहे हैं। डेटा इतना ज्यादा फीड दिमाग में भर गया, हमें क्या बनना है? तो इतना पढ़ा लिखा हूं तो यही बन जाऊंगा। यही प्रॉब्लम है सारी, इससे निकलना है बाहर। और ये इतना ओवरलोडेड हो गया हमारे दिमाग में। आगे देखिए, सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड अदर इंफॉर्मेशन, जब आगे इनके ऊपर केस होगा तो बताएंगे कि और क्या क्या उठा रहे हैं। कैम्ब्रिज एनालिटिका इलेक्शन मैनिपुलेट करती थी। बिहार इलेक्शन किया, यूके का तो किया, यूएस का भी किया, और बहुत सारे इलेक्शन एक्सेप्ट किया कि हमने किए मैनिपुलेट। वी कुड 5 से 7%, सर मेरे ख्याल से इतना वोट शिफ्ट कर देते थे वो लोग। 5 से 7% वोट शिफ्ट, तो कर्नाटक इलेक्शन चेंज हो गया। 0.1% पे तो हिमाचल इलेक्शन शिफ्ट हो गया। कितना है हिमाचल इलेक्शन का लास्ट रिजल्ट? 0.1% शिफ्ट। सरकार बदल गई। ये खेल है सर। यदि हम 0.1% या 2% भी शिफ्ट कर गए
तो हम तो देश कंट्रोल कर लेंगे, हम तो दिखाएंगे कि यहाँ कौन किंग बनेगा, यहाँ कौन पीएम बनेगा, सीएम कौन बनेगा, सब कुछ मेरे हाथ में। यस सर, वन शुड हैव अ पॉलिटिकल बैकअप। ऐसे कोई नहीं बन सकता कि अगर वो सोच भी ले अगर मुझे पीएम बनना है तो वो नहीं बन सकता। वन शुड हैव अ पॉलिटिकल बैकअप। सर, ये तो ये लिमिट नहीं है। ये नहीं, ये जो आप सोच भी रहे हो ना, ये भी लिमिटेशन की वजह से ही सोच रहे हो। सर, वन बैकअप होना चाहिए। मैं आपको दिस विल डिस्कस इज ऑफ पीएम का ओके। ये आपका इंडिविजुअल, मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, आपने सोचा नहीं तो गलती कर दी, अच्छी बात है, नहीं सोचा तो कुछ अच्छा ही करोगे लेकिन मैं नहीं कह रहा कि हर आदमी पीएम बने, मैं कह रहा हूं कि हम जो भी सोच पा रहे हैं, यदि आपने सोचा होगा कि मैं सीईओ बनूंगा, ठीक है, आपने सोचा सीईओ बना, एक गांव के पास जाता हूं मैं, एक बच्चे के पास से कहता हूं भाई तूने क्यों नहीं सोचा कि सीईओ बने, वो कहे यार नहीं यार उसके लिए ना फादर के पास पैसा होना चाहिए, ही विल फाइंड सम रीजन, बट बनते तो गांव वाले भी सीईओ है, ऐसा तो नहीं है, सोचने का खेल है। धीरूभाई अंबानी कोई ऐसा नहीं है सर, और ऐसे हजारों पॉलिटिशियन बता दूंगा। सो देयर इज नो पॉलिटिकल बैकअप, इट्स जस्ट दिस, जिस दिन आपने सोच लिया ना कि खेल हो जाएगा उसी दिन। ओशो की एक कहानी है, और मैं यहाँ जानबूझ क्योंकि आपने सवाल कर दिया इसलिए मुझे सुनानी पड़ रही है, बिकॉज जो मैं बोल रहा हूँ आफ्टर ईयर्स ऑफ रिगरस एक्सपीरियंस बोल पा रहा हूं, मैं तो पीपीटी भी नहीं खोलता, और मैं जितने कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ उससे प्रैक्टिकल इवेंट्स, अभी कुछ दिन पहले सर एक इवेंट हुआ, हल्ला हो गया, मिस कॉल से पैसे निकल गए, निकले थे 75 लाख रुपए निकल गए मिस कॉल से, मिस कॉल आई पैसे निकल गए, टीवी पे सुबह से टीवी वालों को मसाला मिल गया, सुबह से शाम तक वो चिल्लाते रहे, अब तो कोई सेफ नहीं है, अब तो मिस कॉल आती है और खेल हो जाता है, तो मैं डिफेंड करता रहा दिन भर, मैंने कहा मिस कॉल से पैसे नहीं निकल सकते, और भगवान की कृपा से वो पेगासस हो गया था जो मिस कॉल से इंस्टॉल होता था, तो लोगों को ये भी लग रहा था कि यार जब फोन हैक हो जाता है तो पैसे भी निकल जाएंगे, 2019 में हुआ था, सो नोबडी वाज डिनाइंग इट आल्सो, तो मैं दिन भर से डिफेंड करता रहा, मैंने कहा यार मिस कॉल से नहीं निकले होंगे, लेट मी इन्वेस्टिगेट, विल सी इट एंड देन विल गिव, बिकॉज इससे क्या होगा, लोग डर जाएंगे, यदि लोगों को लगेगा मिस कॉल से निकल रहा है वो तो डिजिटल ट्रांजेक्शन बंद कर देंगे, तो मैंने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। अगले दिन जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो विक्टिम का फोन मेरे पास आया, और ये मेरे संग दीपक जी, सुबह से शाम हम लोग इन्वेस्टिगेशन ही करते हैं, ये गृह मंत्रालय में बड़े जो सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन उनकी रिपोर्ट बाहर नहीं आती, यही करते हैं, इसलिए यदि मैं थोड़ा समय ले लूं तो प्लीज सॉरी सर, लेकिन these are the things which gives you the real facts behind all these cyber crimes. तो जब मैंने फोन इन्वेस्टिगेट किया तो पहला क्या डाउट होता है कि कोई फोन के अंदर एप्लीकेशन होगी, वो एसएमएस पढ़ रही होगी, बाहर भेज रही होगी और डिलीट कर देती होगी, क्योंकि उनके फोन में ना कोई एसएमएस अलर्ट था, ना ओटीपी, ना कुछ नहीं था, मिस कॉल आई थी, पैसा चला गया, बोले कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी जो एसएमएस पढ़ के बाहर भेज रही है, देखा गया भाई कोई एप्लीकेशन, तो आपके फोन में आप देख सकते हो ना कि कौन कौन सी एप्लीकेशन है जो एसएमएस का एक्सेस लेके बैठी है, कैन यू सी दैट और नॉट, यस और नो, सेटिंग्स, परमिशन मैनेजर, कैमरा, माइक्रोफोन, एसएमएस कॉन्टैक्ट लिस्ट, एसएमएस पे क्लिक कर दो, इट विल शो यू व्हाट ऑल एप्लीकेशंस आर टेकिंग द एसएमएस एक्सेस। अभी एक और नया फीचर आ गया है, एंड्रॉइड प्रिवेसी डैशबोर्ड, वो भी देखा अच्छा फीचर है, एंड्रॉइड 12-13 में है ये, जिसकी वजह से व्हाट्सएप रात में सुन रहा है, ये हल्ला हो गया कि व्हाट्सएप रात को भी सुनता रहता है, आपको पढ़ना गूगल, फिर आप चैलेंज करोगे इस नहीं सर तो गूगल की है, तो हुआ क्या कि देखा तो उनके फोन में कोई एप्लीकेशन नहीं थी जो एसएमएस पढ़ रही, कोई भी नहीं थी, तो बड़ा स्ट्रेंज हुआ, मैंने कहा यार मिस कॉल आई है, मिस कॉल के टाइम पे पैसे गए हैं, फिर कैसे गए, तो फिर किसी ने सलाह दी सर ऐसा तो हो सकता है कि कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई हो और फिर अनइंस्टॉल हो गई हो, मैंने कहा हाँ बिल्कुल हो सकता है, सो देयर इज अ वे थ्रू व्हिच वी कैन चेक कि आप फोन के अंदर कब कब एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई और अनइंस्टॉल, गूगल भी इंफॉर्मेशन दे सकता है, एक्टिविटी लिस्ट से भी आप पता कर सकते हो, बट देयर आर मल्टीपल वेज, सो वी फाउंड that yes, there was an application installed in his phone on Thursday evening and uninstalled on Sunday evening. Thursday install हुई, Sunday uninstall हो गई, किसने की इंस्टॉल हुई, तो देखा गया कि जब इंस्टॉल हुई उस समय इनकी लोकेशन क्या थी और जब अनइंस्टॉल हुई उस समय इनकी लोकेशन क्या थी, तो दोनों टाइम इनकी लोकेशन इनके घर में ही थी। अच्छा भाई घर में किसी ने की होगी, तो पहला डाउट वाइफ पे गया, अब वाइफ से कौन पूछे, हमारे यहाँ कहावत है बुंदेलखंड में, को कहे वो को बैरी होए राजा साहब से दुश्मनी लोग तो हम लोग बिना वाइफ से पूछे भी पता कर सकते हैं कि इन्होंने एप्लीकेशन इंस्टॉल की या नहीं की, कैसे कर सकता, ये देखकर कि जिस समय इनके फोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही थी उस समय वाइफ के फोन में क्या हो रहा था, इफ शी वाज डूइंग समथिंग
तो वो एप्लीकेशन इंस्टॉल उस समय नहीं कर सकती। शी वाज वाचिंग समथिंग, सम फेसबुक चल रहा है, व्हाट्सएप चल रहा है, पेटीएम हो रहा है, कुछ तो एक्टिविटी, और आपकी हर मिनट की एक्टिविटीज रिकॉर्डेड होती है, हर सेकंड की, जो भी आप कर रहे हो सब रिकॉर्डेड है। यस और नो? तो बताओ कैसे देखेंगे हम? देख सकते हैं अभी? लिखो सर इस पर माई एक्टिविटी डॉट गूगल, अपने अपने फोन में खोल लो, ब्राउजर खोलिए और उस पर लिखिए माई एक्टिविटी डॉट गूगल डॉट कॉम। अपने अपने ब्राउजर को खोल के माई एक्टिविटी डॉट गूगल डॉट कॉम लिखिए। इट विल शो यू योर एक्टिविटीज दैट यू हैव बीन डूइंग सिंस लास्ट मेनी मेनी ईयर्स। यस, मुंह खुल गया इनका इनका इंटरनेट बंद हो गया, कोई बात नहीं, अपना अपना फोन पे देख लीजिए, दिख रहा है? स्क्रॉल करते जाइए, इट विल शो यू, यू कैन फिल्टर इट डेट एंड वाइज ऑल्सो। तो जब हमने देखा कि उनकी वाइफ के फोन पे तो ये कुछ कुछ और कर रही थी, तो फिर ये तो इस एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं कर सकती। तो अगला शक गया बच्चे के ऊपर। बच्चा बहुत छोटा था, उसका आईपैड लिया गया, उसके आईपैड में एक एप्लीकेशन मिली हमें जिसका नाम है डिस्कॉर्ड। कितने लोग जानते हैं डिस्कॉर्ड? वेरी गुड। तो मैं डिस्कॉर्ड के बारे में, डिस्कॉर्ड यूज करते हैं? क्यों करते हैं यूज? वेरी गुड। और क्या 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 फीचर्स हैं डिस्कॉर्ड में? गेमिंग, स्ट्रीमिंग। अब मैं बताता हूं डिस्कॉर्ड का रियल यूज, जिसके लिए क्रिमिनल्स डिस्कॉर्ड पर। देखिए कई सारी ऐसे चैट, डिस्कॉर्ड इज अ चैट एप्लीकेशन, जिसको नहीं पता है, इट्स लाइक व्हाट्सएप, सिग्नल, टेलीग्राम, प्राइमरीली वही है। वीडियो कॉल कर सकते हो, चैट कर सकते हो, ऑडियो कॉल कर सकते हो, बट इट इज एनोनिमस चैट ऐप। इस पर आप जब होते हो तो आप अपनी पहचान पूरी तरीके से छुपा सकते हो। नाइदर योर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, बोथ इज नॉट लिंक्ड विद योर डिस्कॉर्ड अकाउंट। ईमेल आईडी आप प्रोटॉन मेल पे खोल लेते हो, सेक मेल पे खोल लेते हो, तो वो वैसे ही प्राइवेट हो जाता है। तो आप पता नहीं कर सकते कि जो व्यक्ति चैट कर रहा है ये है कौन। कोई लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर नहीं, कुछ नहीं कर सकता। जब आप डिस्कॉर्ड पे अकाउंट खोलते हो तो आपको एक हैंडल मिलता है kirk5372 हैशटैग, और आप kirk5372 से पूरी दुनिया से बात कर सकते हो, अनलेस अनटिल मैं जाऊं आपके कान में बताऊं कि वो जो हैशटैग kirk5372 है मैं हूं, तब तक कोई और पता नहीं कर सकता। तो सारे क्रिमिनल डिस्कॉर्ड पर हैं या ज़ैंगी ऐप पे हैं। ऐसी एक और ऐप है ज़ैंगी, जो अभी बैन कराई हमने, चाइनीज ऐप थी वो भी एनोनिमस चैट ऐप करती थी। और दुनिया भर में बात कर लो आप, इलीगल चीजें उस पर प्रोमिनेंट हो जाती हैं, चाहे आप जितने भी क्रिप्टो करेंसी परचेज हो रहे हैं, प्रमोशंस हो रहे हैं, या ड्रग्स के हैं, या जो भी इलीगल चीज, बिकॉज एनोनिमस। सो अधिकतर क्रिमिनल डिस्कॉर्ड पे मिल रहे हैं आजकल, कुछ पॉलिटिशियंस भी और कुछ बच्चे। बच्चे तो सारे ही, ऑलमोस्ट एवरी किड इज ऑन डिस्कॉर्ड। यस और नो? आप चेक कर लेना अपने घर में जाके, यदि वो टीनेज किड है तो वो डिस्कॉर्ड यूज कर रहा हो। डिस्कॉर्ड के अंदर दिस गाय वाज इन टच विद अ गर्ल, उसको लगता था कि वो लड़की है, मुझे कंफर्म है कि वो नहीं थी और उसने उसको ऑफर किया कि तुम भी एप्लीकेशन अपने फादर के फोन में इंस्टॉल कर दो, 200 रोबक्स पॉइंट्स मिलेंगे। अब कौन बताएगा मुझे रोबक्स पॉइंट्स क्या होता है? हु कैन टेल मी? रोबक्स पॉइंट, बैटल पॉइंट्स पता है क्या होता है? वेरी गुड। रोब्लॉक्स गेम है, रोब्लॉक्स गेम के अंदर जो करेंसी होती है उसको रोबक्स कहते हैं। रोबक्स करेंसी बाई डायरेक्शनल करेंसी है, आप इसको रुपीज से खरीद सकते हो, इसको वापस करेंसी को रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हो, लाइक क्रिप्टो करेंसी। जो बैटल पॉइंट्स है दैट इज पबजीज करेंसी। तो जो आप सुनते हो ना, पबजी के चक्कर में खून हो गया, चाकू मार दिया, किडनैपिंग हो गई, वो पबजी के चक्कर में नहीं होती, वो बैटल पॉइंट्स के चक्कर में होती है, जो उसकी करेंसी है। तो रोब्लॉक्स की करेंसी है रोबक्स। रोब्लॉक्स बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, क्यों? क्योंकि जितना मेटावर्स क्रिएट हो रहा है ना, जिस पे हल्ला हो रहा है फेसबुक का, वो सारा का जो फाउंडेशन है, विच इज रोब्लॉक्स। रोब्लॉक्स इज द प्राइमरी फाउंडेशन ऑफ मेटावर्स। रोबक्स जो करेंसी है, इंडिया से हर साल 2.5 से 3 बिलियन डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग रोबक्स के थ्रू हो रही है आजकल। जब आप पुलिस वाले कहीं छापा डालते हैं, लैपटॉप उठाया, मोबाइल उठाया, ये उठाया, डायरी ले ली, सब ले लिया, ये थोड़ा देखते हैं कि आपने कितने गेम इंस्टॉल कर रखे हैं तो ये कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं, जिसकी जो सोशल मीडिया और जो चीजें आज सुबह से डिस्कस हुई, उसके इतर बताने वाला था डिफरेंट। वो एक 200 रोबक्स पॉइंट के चक्कर में बच्चे ने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दी और फिर अनइंस्टॉल भी कर दी, क्योंकि उस लड़की को लगा फिर दांव लगेगा तो फिर उड़ा लेंगे। ये जो बिजनेसमैन था, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में था, हैवी पैसे आते थे, उसको पता था तो इनका फ्लो बड़ा तेज है। आज 75 लाख आया है, कल
5 करोड़ भी उड़ा सकता है। मैं ऐसी कहानियां सुनाता रहूंगा, मेरे पास 500 कहानियां हैं तो मैं यार रुक जाता हूं। ये दिखा दिया था मैंने, ये वो वापस वहां प्ले स्टोर एक बार दिखाओ, नीचे स्क्रॉल करके दिखाओ फेसबुक और क्या क्या लेता है। हाँ, स्क्रॉल स्क्रॉल डाउन। तो हमने देखा पॉलिटिकल और रिलीजियस बिलीफ पता है उसको। उसके बाद फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, परचेज हिस्ट्री, पेमेंट इन्फो, क्रेडिट स्कोर, हेल्थ एंड फिटनेस, आप कितना वॉक करते हैं, कहाँ चढ़ाई चढ़ रहा है नहीं चढ़ रहा है, फिटनेस आपकी है कैसी, आपको कब हार्ट अटैक आने वाला है। अभी देखो एआई अभी जिस हिसाब से इवॉल्व कर रहा है, इवेंचुअली आपके घर में सीधे दवाई पहुंचेगी हार्ट अटैक की। भाई साहब शाम को 8 बजे आने वाला है, खा लो इसको, इस हद तक जाने वाला है। तो हेल्थ एंड उसका मैसेजेस, ये ईमेल, एसएमएस, एमएमएस, ओटीपीस, ऑफ कोर्स एसएमएस का मतलब है ओटीपीस, इन ऐप मैसेजेस, यदि वो इंक्रिप्टेड नहीं है तो दूसरे ऐप के मैसेज भी पढ़ रहा है वो, फोटोज एंड वीडियोस, वॉइस एंड साउंड रिकॉर्डिंग, म्यूजिक फाइल्स, ऑडियो फाइल्स, फाइल्स एंड डॉक्स, कैलेंडर, कॉन्टैक्ट्स, ऐप एक्टिविटी, अब मतलब सब कुछ in short. So thank you so much. I'll not take much time. We have Just in case, beautiful. Before I go on to Mr. Deepak Kumar, just to give a little background, I couldn't really introduce him at that time because we were already behind schedule. Mr. Amit is a renowned national security expert, cybercrime investigator, and a researcher in artificial intelligence, quantum computing. He's been appointed as a key member of various task forces created by Government of India, member of the R&D working group at the Ministry of Electronics and IT, member of Police Technology Mission UP, Government of India, member of Cyber Security Policy Draft Committee, and member of BPR&D Content Development Committee. He holds 22 years of rich experience in telecom and mobile phone software domain with leading telecom MNCs. So now we really know who is the expert and how much he has explained to us and given us a completely different oversight of what we are, how much we are trapped or not trapped into all this. Thank you so much, Mr. Manik. We now have Mr. Deepak, Mr. Deepak Kumar. He's in the Indian Cybercrime Coordination Center, Ministry of Home Affairs, Government of India. Over to you, Dr. Deepak Kumar. Thank you. Thank you for inviting us here. This is my second time in PhD's chamber. And along with my senior colleague, Deepak sir and Purnima madam is there from I4C. I4C is basically Indian Cybercrime Coordination Center. That is a nodal for cybercrime in India, which is recently 2018 it came in there. And before jumping with I4C, first would like to say thanks to Amit ji, because he explained very well about this data part, because जो कुछ है data है, सारा कुछ खेल जो है data का है. And the thing which we are carrying in our hand, that is not a bomb, that is called digital bomb. और इसमें दंगे से लेकर फेक न्यूज से लेकर अच्छी चीजों से लेकर बुरी चीजों से लेकर multiple narratives can be initiated. So that is since morning, like we are discussing from various channels. My friend Kushal also explained about from the gaming perspective. So multiple things we have covered regarding the things. The thing which left, which I would like to hear, I foresee we need people like you, the experts from private sector, from the government sector, from the different areas. I am heading a team that is called Threat Intelligence Unit, TAU, and all the emerging cyber crimes which comes, including, you know, artificial intelligence, metaverse, ChatGPT, whatever you take, things, malware, you know, these things we are taking care, we study what exactly we need. But the policy perspective, the data privacy perspective, the legal challenges and what barriers are there, that is the main concern. Simple सा है, डॉक्टर तभी आपका उपचार प्रॉपरली कर सकते, उसको मालूम एग्जैक्टली इशू क्या है. साइबर में चैलेंजेस क्या है सबको पता है, बट साइबर में चैलेंजेस को तोड़ना या उसको ओवरकम करना या उसको रिड्यूस करना या कंप्लीटली खत्म करना, इट्स अ वेरी बिग चैलेंज, अनदर चैलेंज. वी नो दैट कि हाँ इन्वेस्टिगेशंस में टूल्स नहीं है, वी नो दैट मैन पावर्स नहीं है, वी नो दैट लीगल चैलेंजेस है. But when we read or study from different perspective, from the research papers you can see, or the committee perspective, then various things are there. So rather discussing the challenges part, like what we are doing and what we need, and the things which you mentioned regarding the reporting perspective and what things required, that I would like to highlight. The first part is like banning of the application. Mobile application plays very important role. You can see Facebook. I'm not using Facebook on mobile, but I can use Facebook on my laptop because socialize जुड़ना है, हमें भी जानना है कि सोशल में चल क्या रहा है. हम इससे
दूर नहीं हो सकते। हमें देखना है कि हमारे पेरेंट्स ने, हमारे कलीग्स ने, गांव में किसी फ्रेंड्स ने, रिलेटिव्स ने क्या पोस्ट किया है, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम डिस्कॉर्ड क्या है, बट एटलीस्ट वी हैव टू कनेक्ट। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि हम यूज नहीं कर सकते। सो वेरी फेमस कोट लाइक इफ द कंटेंट और यू कैन से डेटा हैज बीन पोस्टेड ऑनलाइन, द जेनी इज आउट ऑफ द बॉटल। मतलब प्रीवियसली एक मिथ है, कुछ भी अगर नेट पे है और नेट पे जाने के बाद कंटेंट अगर डिलीट होता है, वो हमारे माइंड, हमारे अंदर से डिलीट होता है, बट स्टिल द थिंग्स आर देयर। And for recovering or carving or through data disclosure policy from various manner, from forensics manner, it can be, we can collect, we can prove as a substantial evidence like this thing was there. And the best example is recently we have blocked 14 application which was used for terrorist activities in J&K regions and all. But we're trying to ban this from pan India level, not from only a specific region. But क्या वो application sufficient है? क्या अदर मीडियम नहीं है बात करने के लिए? There are various mediums are there. So once we know that how these technologies work, then only we can able to use how to use these technological aspect, like to ban something. Effectively ban is something else. If something is violation is, so then what are the roles of intermediaries, like whether they're complying in proper manner or they're just saying that yes we complied something. क्योंकि यहाँ पे एक दिन में करोड़ रुपए कमा लेते हैं लोग, फिर भले शाम को बैन कर दो, nothing mean. So discussing various emerging threats, awareness perspective, and also we have some sort of understanding. So I4C have 7 verticals. You can visit the website, you can Google itself I4C MHA. You will see exactly what is I4C and MHA, what exactly they are doing, and they are doing really literally a very good job, and we need you people. So let me explain one by one. One is Threat Analytical Unit, TAU. TAU is basically a unit which you can say banning of the application. If any new cybercrime things are happening, finding the root cause, finding the understanding exactly what is the modus operandi. A simple example, आपको मालूम है कुछ दिन पहले WhatsApp पे काफी कॉल्स आ रही थी 2++2518565 से. So our ministry, we are from MHA perspective, so we know that state में जो cyber पे जो subject matter है, या फिर आप कह लीजिए जो state jurisdiction perspective है, उसमें state DGs work करते हैं. Cyber crime is state subject basically. So हम कुछ भी centrally कर लें, but end of the day अगर मिजोरम में या फिर मध्य प्रदेश में या कर्नाटक में कुछ हो रहा है, तो state का SHO का power होता है basically to work out that case. So the point here is like if everything comes in MHA perspective, then what exactly MIT is doing. So ministerial perspective, sometimes we give some input to ministry, different ministry के purview में जो आता है वो अपने हिसाब से काम करती है, तो हमें findings करनी है. तो हमारा main perspective है कि जो हमने emerging threats से informations find की, like when you mentioned about Facebook, but Facebook is complying our concern. Means if suppose something happened from Facebook, we ask information to them by 91 CRPC, or you can say, or sending 79-3B for banning or blocking something. So they study and they comply those things. But pertaining to different entities, like recently some application block, you can say PUBG and PUBG ऐसे कल दोबारा unban हो रहा है 3 महीने के लिए, because they comply. उन्होंने घुटने टेक दिए कि हाँ हम comply कर सकते हैं. तो जो comply करेगा, मतलब आप समझिए कि अगर आपका डेटा लीक होता है या हैक होता है, तो आप पुलिस के पास आएंगे. पुलिस इंटरमीडिएट से रिक्वेस्ट भेजेगी कि वी नीड सम इंफॉर्मेशन कि किसी ने CSAM एक्टिविटी या पोर्नोग्राफी या डेटा डिलीट कर दिया या फिर हैक कर लिया. अब उस केस में अगर इंस्टाग्राम डेटा नहीं देगा, तो इंस्टाग्राम इंडिया में कर क्या रहा है? बिकॉज एंटायर बिजनेस कमिंग थ्रू इंडिया का पॉपुलेशन ज्यादा है कि अगर वो एक बंदा एक अकाउंट भी क्रिएट कर ले, सो यू कैन सी इंस्टाग्राम अर्न हेल अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम हियर, लाइक यू कैन सी. सो दोज हु कंप्लाई, दे work properly here, and those not able to comply properly, like they don't have a grievance or nodal information in India perspective, they're not furnishing any information, then we try to study that. You cut your things and then they go. So answer first TAU perspective. So जो WhatsApp वाला concern था, उसको लेकर के पिछले 5 दिनों में काफी changes हुए हैं. आपको काफी कम calls मिली होंगी, उसके बाद में अचानक reduce हुआ. हम completely ban, block, stop नहीं कर सकते, reduce कर सकते हैं किसी भी flow को. So they integrate AI features in TRI perspective, DOT perspective, then they able to understand exactly कि स्टडी की जाए कि ये कॉल्स कौन क्रिएट हो रही हैं, कब क्रिएट हो रही हैं, इंडिया के जुडिक्शन में क्यों आ रही हैं कॉल्स, एंड is it like they are the Indians, or you can say they are from different countries like that. So to understand this modus operandi, we have to send
these number to WhatsApp Meta basically, and then they'll say that कि yes, those numbers जब register होते हैं उनकी IP ताइवान या मलेशिया डिफरेंट कंट्रीज या इंडिया होती है, तब हमें एग्जैक्टली मालूम होती है, और नॉर्मल यूजर्स इस इंफॉर्मेशन को नहीं ले सकता. तो समटाइम दिस टाउ play information role, and these int, those who goes through closed channel or different ministerial perspective, we send them ki yes, the technical findings which we found, you also study, review, and you also put your comments, and collaboratively you can come, so we can discuss, like either we have to block, cut, remove, whatever things comes in this manner. The game is about information warfare, economic warfare. जब यूसी ब्राउजर में सर्च किया जाता है कि मुझे 5000 का फोन चाहिए, UC browser, you know how many of them use UC browser earlier in 2012, 13, 14, 15? Everyone. आज देखो, आज हर गली में, हर दुकान में Vivo, Oppo, Loco, Poco, Moco जितने भी ऐसे हैं सारे अवेलेबल है कि नहीं? LG ये और भी Micromax सब उड़ गए, इनका मार्केट है ही नहीं. So what exactly is this? It's a data. So when you search something on, you know, UC browser perspective, Opera browser, the DNS goes through Hong Kong or China province country. They don't say like we are the leaks or we are the hackers. They are the state sponsored perspective, not pointing to country specific. Any non-friendly nation, it's not only this, any non-friendly nation, they keep data and they try to create good narrative and they initiate those things. From cybercrime to cyber espionage or cyber terrorism, the main player is two. One is call your data, and second is use call your, that is human error. We say a human error, like a very simple example. We just like an application basically. So we heard about a news like 75 lakhs चले गए, 50 लाख चले गए. आप ये बताइए कि किसी हैकर को अगर कुछ हैक करना है, what exactly he or she need? He needs some connectivity, some endpoint. It could be your IP, it could be your number. हमारी इन्वेस्टिगेशन पुलिस की IP और नंबर के अलावा जाती ही नहीं है. सबसे बड़ा लूप होल तो ये है. I4C helps into investigation perspective in under NCTC, that is called National Cybercrime Training Center. Second vertical after TAU. NCTC do what? They try to update not only to the law enforcement officers as well, judiciary including lawyers as well, PS as well. So they should know the technical jargons. What exactly is hash values? Why it important to maintain the integrity? If any crime happened for a call center fraud, which is happening remotely from Dubai to here, if IO will not seize or cut down these things and seize these all evidence, नहीं तो डेटा चला जाएगा, वो हैकर रिमोटली सारा काम कर लेगा. पर ये चीज जब एक ग्राउंड लेवल में जुडिशरी से लेकर सारे फ्रेटर्निटी को मालूम होगी, तब वो प्रॉपर्ली वर्कआउट होगी. एल्स बेल मिल जाएगी और वो दोबारा उस चीज को रन कर सकता है. आप एक ऐप बैन करेंगे, वो दूसरे आईपी पे वो चीज रन कर सकता है. सो मैनी एंगल्स आर देयर. सो पॉइंट हियर इज NCTC, National Cybercrime Training Center, like a SciTrain. SciTrain is a website which comes in NCRB. So those who having GOV email ID and NIC email ID or government officials or PSUs, they can able to study, learn these chapters. Basically, that is free of cost for the LEAs. And that is only for investigation perspective, one. So a person sitting at Andaman Nicobar, he not able to come Delhi or in Lakshadweep or maybe in Bihar, जो बंदोबस्त ड्यूटी में है, but he is part of cybercrime. So at least he can study those things from portal. So that is the second vertical, that is NCTC. Similarly, how many of them you know exactly forensics play important role? Yes or no? Cyber forensics play very important role in any prosecution. Conviction rate क्या है आज के इंडिया में? क्या कोई बता सकता है? Anybody tell me the conviction rate of in India in any cyber crime? Single figure में है. Less than 1%. आपने 1% बहुत मतलब डिपेंड्स. अगर स्टेट की बात की जाए तो कुछ स्टेट ने अच्छा है. पर exactly the question is, so when we study the lack, exactly why the lacks are there? सारा इन्वेस्टिगेशन हो गया, एक सिंगल सा क्वेश्चन रहा कि आपने सीजिंग किया, आपने प्रॉपर्ली SOP फॉलो किया, सब थिंग्स आर डन वेरी वेल, बट एक सिंगल क्वेश्चन प्रोसिक्यूशन में अगर उल्टा हो गया तो स्क्वैश. सो पॉइंट यहाँ पे यही है कि जब तक हम इस ग्राउंड लेवल पे इस टेक्नोलॉजी को सरकारी भाषा में नहीं समझेंगे, सिंपल भाषा में नहीं समझेंगे, उस आईओ को नहीं मालूम होगा कि रनिंग कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में हमें सीज कैसे करना है, हैश वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, इसको फॉरेंसिक लेबोरेटरी कहाँ भेजनी है, हमें अगर 91 भेजना है तो उसमें एमलेट कैसे काम करेगा, डेटा डिस्क्लोजर पॉलिसी में हमें क्या चेकलिस्ट बना के भेजनी, फंडामेंटल चीजें हैं. इन्वेस्टिगेटिंग में आईओ एसएसओस काम करते हैं, वो इतने ओवर बर्डन होते हैं कि उन्हें फंडामेंटल चीजों के लिए उनका तो रिटायरमेंट होने वाला है. So we're not here to discuss the challenges. These are the problem. Then how we can help from I4C? That is the important thing which is there. So third vertical is called
National Cybercrime Eco Management System, NCEMU. So ecosystem management is very important vertical that is for awareness perspective. हम ये नहीं कहते, अब ये बताइए कि अगर आपका फोन गुम जाता है या फिर आपके साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है, can anybody tell me what exactly is the toll free number to make a call? Who is there? 1930 और बाकी लोग? So the website is that. So thank you, salute to you sir. At least you know about 1930. हम सारे साइबर लीगल वाले हैं, दिल्ली में हैं. हमें नहीं पता, हमारी मिनिस्ट्री को ही नहीं पता, हमारे लोगों को ही नहीं पता. हम गांव में जाके किससे क्या बात करें? और फ्रॉडस्टर वो ये नहीं देखता कि आप किस रैंक के अधिकारी हैं, वो तो किसी को भी चूना लगा सकता है. So very appropriate thing like we have 1930 toll free number. आपको मालूम होना चाहिए इस शॉर्ट पीरियड में 2-3 सालों में हमने लगभग 450 करोड़ से ज्यादा रुपए हमने बचाए हैं. That is one of the major flagship which we have done so far. Still वो प्रोसेस में है और स्ट्रेंथन कर रहे हैं. अभी चीजें मैनुअल हैं. We trying to make it more, API based automatic perspective things where all the banks are there. Simple concept. Maximum cyber fraud में cyber crime में financial angle is very important angle. Revenge, data चोरी ये बहुत less percentage में है. So around 60 to 70% crimes are basically what these are cyber financial frauds. तो अगर आप की कितनी अच्छी पहुंच है, पुलिस से भी है, पर वो भी 1 दिन 2 दिन लेगी. और यहाँ बैठे बैठे 2 मिनट में आप चाहो तो पेटीएम से, ICICI से, SBI से पैसे को ऐसे घुमा सकते हैं कि 2 मिनट में आप दुबई की टिकट बुक करके आप दुबई भी जा सकते हैं 1 घंटे के अंदर. है कि नहीं? है कि नहीं? एंड सिमिलरली सो व्हाट वी हैव डन, वी डिड, हमने पूरे बैंकिंग इंडस्ट्रीज, फिनटेक एनवायरनमेंट इंडस्ट्रीज को एक प्लेटफॉर्म पे ला दिया. दैट इज कॉल्ड साइबर पुलिस, cyberpolice.nic.in. इट्स अ पोर्टल, इट्स अ गवर्नमेंट, इट्स फॉर ओनली LEA's पर्सपेक्टिव. तो जो LEA है, LEA मतलब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, उस तरफ ना जाकर के उससे पहले ही बैंक के टिकट चला जाए कि आपके पेटीएम से पैसे कटे, आप पहले इसको होल्ड करो. अब जब होल्ड हो जाता है पैसा तो एटलीस्ट चांसेस होते हैं रिकवरी के. इसके लिए भी हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं कि उसको सही तरीके से, चाहे कोर्ट ऑर्डर के माध्यम से या चाहे पुलिस के माध्यम से, किसी से रिकवरी की जा सके. सो गुजरात स्टेट ने प्रॉपरली कुछ फाइंड किया है अपने कोर्ट ऑर्डर के माध्यम से, जहां पे खुद वो पैसे को रिकवर भी करके विक्टिम के खाते तक पहुंचा देते हैं. अब सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको जाना है केदारनाथ, आपने केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर बुक करनी है, हम किसका यूज करते हैं? गूगल का. गूगल पे जो भी चीजें आती हैं वो अक्सर स्टार्टिंग में एड्स आती हैं, स्पॉन्सर्ड कंटेंट आते हैं. आपको पता है मैक्सिमम क्राइम्स वहीं से हो रहे हैं. उत्तराखंड पुलिस ने काफी चीजें बैन की हैं, ब्लॉक की हैं, पर वेबसाइट दोबारा आ सकती हैं. तो आप ये बताइए, अगर हेलीकॉप्टर 14,000 में आने जाने का हो रहा है, बट कोई अगर 11,000 में दे रहा है तो लगता है चलो ठीक है सस्ता दे रहा है, पर अगर 2,000 में दे तो लगता नहीं कि चोर है, ये गलत है, फ्रॉड हो सकता है. तो हैकर्स को सब पता है. हमारी तरह हम भी हैकर्स हमारी तरह ही बैठे होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको जॉब मिलती नहीं है. उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं अगर हम इस तरह की चीज में आ जाएंगे तो हमें जो हम अर्न कर उससे ज्यादा वो अर्न कर सकते हैं, बट वो पकड़े जाते हैं. आपको एग्जांपल मालूम होगा, पिछले हफ्ते एक बहुत बड़ा बस्टिंग की गई हरियाणा में, जहां पे लगभग काफी पुलिस को भेजा गया और 150 से ज्यादा लोगों को पकड़ा भी गया. बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ द इंट फ्रॉम द कोलैबोरेटिव एफर्ट व्हिच वी हैव डन फ्रॉम टाउ, I4C as well from state police with the help of numbers. So point here is NCEMU सारे एकेडमी से लेकर, कॉलेज से लेकर, जुडिशरी से लेकर जितने भी फैटर्निटी हैं, सबको साइबर जागरूकता हर महीने की पहली बुधवार को एक होता है अवेयर, दैट इज अवेयरनेस प्रोग्राम व्हिच इज देयर, बट स्टिल जस्ट लाइक आई एम हियर, स्टिल अ पार्ट ऑफ दैट NCEMU पर्सपेक्टिव. सो मी माय कलीग we have done various sessions into from NCC से लेकर के, जितने भी NCC हमारा एक वर्टिकल है साइबर वॉलंटियर के लिए, कॉलेज से लेकर अपने जितने भी ONGC, पेट्रोलियम से लेकर मिनिस्ट्री ऑफ पावर, जितने भी मिनिस्ट्रीज होती हैं, सारे जगह पे ट्रेन करना, अवेयरनेस फैलाना. साइबर क्राइम की रियल ट्रेंड हमें पता है क्योंकि हमारे पास पोर्टल है. आप अगर पहले विक्टिम बनते थे, अगर आप जाते थे पुलिस स्टेशन में तो बोलते वो लॉस हुआ कि नहीं हुआ, अब मुझे सिर्फ 100 रुपए कटा है, पर मुझे पता है अगर ये इसको आप नहीं पकड़ेंगे तो शायद ये आगे फैला सकता है. LEA may say that अरे छोड़ो यार 100 रुपए क्या हटाओ. आज क्या है कि आज कोई भी उठा करके साइबर क्राइम पे जब रिपोर्ट डालता है, वो एक इंटेलिजेंस फीड होती है हमारे लिए, मेरे लिए. मुझे मतलब नहीं है कि LEA ने उसका क्या किया, पर मेरे लिए एक्चुअली कि अगर मल्टीपल डेटा अगर ले करके स्टडी करके, डेटा को स्टडी करके फाइंड कर दो, शायद मैं कुछ फाइंड कर सकता हूँ कि इसका रूट कॉज क्या है, इसका मेथड क्या है. लाइक ही सेड मैक्सिमम कंसेप्ट मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ये प्लेटफॉर्म यूज किया जाता है. वी कैन एक्सप्लोर. सो द इंट वी आर गेटिंग फ्रॉम सच एक्सपर्ट्स लाइक दिस, फ्रॉम यू, फ्रॉम एनी रिसर्चर, बेसिकली दैट इज द आउटपुट. सो NCEMU इज देयर एंड वी
having a that is a handle called Cyber Dost, CYBERDOST. Cyber Dost एक ऑफिशियल हैंडल है हमारी मिनिस्ट्री का, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। 11 चैनल्स में अवेलेबल हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एवरीवेयर। साइबर दोस्त I4C, साइबर दोस्त। साइबर दोस्त में हम लेटेस्ट कंटेंट पोस्ट करते हैं अवेयरनेस का लेकर के, या इमर्जिंग ट्रेंड क्या चल रहा है, एंड यू विल रीड, यू कैन retweet as well, you can able to use that content, you can put your logo and you can also disseminate in your manner, Hindi, अंग्रेजी, local भाषा जो भी है। So 3 verticals done, that is also part of that. 4th is called Cybercrime Reporting Portal. Can anybody tell me what exactly is the portal website? To report your grievance about cybercrime from Pan India? सर ने बताया cybercrime.gov.in. If I'll say cybercrime.com, then are you sure it's a fake cybercrime.com? Or cybercrime.gov? Okay, so telling you very clearly, 2 things are here. cybercrime.gov.in is our website, ministry website. cybercrime.com और .in ये भी है, but हमारी नहीं है। ये गलत नहीं है, ये प्राइवेट सेक्टर किसी की हो सकती है, NGOs की हो सकती है, पर MHA की जो बेसिकली वेबसाइट है, दैट इज cybercrime.gov.in। हमें हर दिन 4000 से 4500 कंप्लेंट इस पोर्टल पे रजिस्टर होते हैं। दैट इज ऑफिशियल फिगर। दिवाली, दशहरा, ईद त्योहार में और बढ़ जाते हैं, नए साल में हर जगह पे अवेयरनेस फैल गई, अब ये और बढ़ेगा। तो आप जब जानेंगे, आप जब सर्कुलेट करेंगे, थिंग्स आर देयर। इसमें निवारण होना, ये भी एक सब्जेक्ट है। रिपोर्टिंग तो कोई भी कर सकता है, तो बहुत सारे केस में होता है क्या, लोग प्रॉपरली एविडेंस नहीं देते हैं, और सारा खेल किसका है, एविडेंस का है। एविडेंस लैक हुआ, things will not work. So in that perspective, people should know कि अगर हमें स्नैपशॉट लेना है, मान लीजिए कि कोई क्राइम हुआ है और हैकर का नाम मैंने पूजा सेव कर रखा है और व्हाट्सएप पे पूजा नाम से चैट हो रही है, मैं इसका स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ पोर्टल पे। अब पुलिस को क्या मालूम कि पूजा के पीछे का नंबर क्या है कि नहीं? तो समटाइम शेयरिंग ऑफ द एविडेंस इज आल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन एनी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और IO इज वर्किंग। तो वो जानेगा ना कि क्या हुआ। अब सिंपल सा लॉजिक है, अगर 75 लाख रुपए या 75,000 रुपए अगर एक क्लिक पे हो जाते हैं, तो जो IO पकड़ेगा उसको बुला के बोलेगा भैया तुम आ जाओ, आज से गेम शुरू करते हैं, ये सारे नंबर्स हैं, स्टार्ट करो। So nothing like that. It's completely misinformation. Fake news is one of the biggest challenge in India, and all the things coming through political, religious as well. This narrative from different agency angles, basically. So counter these things. Deep fake technology है, cases बहुत कम है इंडिया में, रियल देखा जाए तो, बट है, पर जब है तो है, it could come from any manner. Deep fake technology, you can say dark web based, ransomware based attacks are there, hackers are there, they're using various challenges. I'm coming to these technological things later, but that cybercrime portal, 4000 complaint daily को लेकर के, cybercrime portal पे we have an option called cyber volunteers. If you are SMEs, matter expert into any domain, you can apply. You can play your role to helping government in this area, like maybe good into Bitcoin investigation. Maybe you have good research paper on to cracking this CSAM activities, child sexual abuse material, or maybe you have good article on demystifying dark web activities. It could be any technological perspective, or maybe you will say that, sir, I have some pointers to do amendment in IT Act. So कैसे कर सकते हैं? Or maybe you have said that कि ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के फ्रांस में यह रणनीति है, ये उनके प्रोसेस है. It's like comparative analysis with different country in the area of online gaming. If that concept we can imbibe, study in our perspective, that maybe do some good changes. So these things are lacking somewhere. We can't say that it's a due diligence perspective, you can say as well, but the thought is this basically. 4 verticals we have done. Under cybercrime.gov.in, we have resource section. In resource section, you can able to read the cybercrime awareness material, Hindi, English, like matrimonial fraud. आपको पता है दिल्ली का केस है, एक युवती ने लगभग 1,46 लाख रुपए गंवा दिए. And she's from very big Oracle. Oracle सबको पता है. I don't like to take the name, but still, a company manager from Oracle, she lost around 1,46 lakh just finding, शादी के लिए. एंड वेबसाइट भी यूज किया गया, वेल नोन शादी.com एंड ऑल. तो हर ब्लू टिक सही नहीं होता, ये ध्यान दीजिए. हर रिव्यू ऑन गूगल प्ले स्टोर सही नहीं हो सकता. हर रिसर्च जो आने वाला है आपके गूगल सर्च इंजन पे सही नहीं हो सकता. तो यहाँ पे हम 1930 को साइड करते, पहले अपनी अवेयरनेस जो ह्यूमन है वो अपडेट करें. वो कहते हैं कि सर अच्छा एंटीवायरस कौन सा है,
तो मैं तो कहता हूँ यार योर ब्रेन इज गुड एंटीवायरस इफ यू एबल टू नो एग्जैक्टली व्हाट टू क्लिक व्हाट नॉट टू क्लिक, क्योंकि सारा गेम तो क्लिक से स्टार्ट होता है। सबको पता है कि फिशिंग लिंक क्लिक नहीं करना है, बट किसी को यह नहीं पता कि किस हालात में क्लिक नहीं करना है। अब मैंने ऐसा ग्रिड क्रिएट कर दिया कि सर आप पीएचडी चैम्बर्स में आए थे, अच्छी फोटोज आपकी हैं, प्लीज गैलरी पे क्लिक कीजिए, गूगल ड्राइव की लिंक मैंने भेज दी है, और जिसने भेजा उसने अपने व्हाट्सएप पे पीएचडी चैम्बर का लोगो लगा रखा था। मेरे लिए क्या है, इतना बिजी स्केड्यूल, यस मे बी सम पर्सन इज देयर, I scroll all the content, but I got to know an image which embedded with some malware. And maybe I download a malware onto my mobile. And from my mobile, a called privilege escalation, or you can say pivoting or attribution or lateral movement, a technical term basically, it can able to see all the content which is in my mobile. What is Pegasus? I won't take about these technological terms, but again, it's a piece of code. And that's a vulnerability. If you open a link in some depreciated version of any browser, then hacks can work. 4 things are there. Then 5th is called NCFL, National Cybercrime Forensics Laboratory, that is in Dwarka. So for LEAs, it's not under 70B basically, but basically what is happening in any investigation, in ongoing investigation, if any police from India, any state, if they want to take help, so they can visit, they can take help from NCFL Dwarka, Delhi, and they have all the state of the art forensics tools, cryptocurrency से लेकर phone damage, broken phone से लेकर कार का नंबर से क्लियर करने से लेकर anything you can say, dead hard drive से data recovery से लेकर everything is there, so that can help. Some tools can remotely operatable, but ये LEAs कोई पता नहीं है. We're trying to help them. So those LEAs they know they are coming through this platform, they can able to use or utilize this framework free of cost. NCFL की ट्रेनिंग्स भी होती हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंसिव ट्रेनिंग। अगर 10 दिन की ट्रेनिंग है तो LES के लिए ट्रेनिंग्स है, प्रोसिक्यूशंस के लिए ट्रेनिंग्स है, बट प्रोसिक्यूटर्स को टेक्निकल नहीं समझना है, उन्हें सिर्फ समझना है मोटा मोटा कि एग्जैक्टली होता क्या है, फोरेंसिक टूल्स कहलाते क्या है। So that is about the forensics laboratory, NCFL, and 4 verticals we have done. 5th vertical again, that is about NCRIC. अब ये बताइए कि रिसर्च करना है या SOP मैनुअल्स क्रिएट करनी है या कोई लीगल चैलेंजेस हैं, इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए नॉर्मली हम BPRD को ये दे रखा है, तो BPRD इज वर्किंग ऑन टू द सेम। उन्होंने काफी SOPs मैनुअल्स निकाले हैं, कोविड में काफी काम किया है कि फेक न्यूज को कैसे डिटेक्ट करना है। LEA पुलिस को, अगर कोई स्टेट की पुलिस प्रॉपर्ली अपडेट नहीं है, अगर उसको हम सेंट्रलाइज्ड एडवाइजरी देते हैं कि SOP मैनुअल ये है, तो शायद वो इजीली पढ़ सकती हैं। सो दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ देयर, एंड वी आर मेनली फोकसिंग ऑन इंडिजिनियस सोल्यूशन। व्हाई वी डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट कंट्री सोल्यूशन? हम क्यों दूसरे कंट्री के सोल्यूशन पर डिपेंड रहे? मुंह मांग के पैसे मांगते हैं कि ये इतने करोड़ का ये वो है, बट क्या वो टेक्नोलॉजी इंडिया में डेवलप नहीं की जा सकती? वेरियस PSUs are there, CDAC, different things are there. If you fund them, that is, so BPRD is also, they have some sort of fund. They do good hackathon. They do good CTF challenges where they can able to find those who want to, a new company that comes in NASCOM or maybe through IDEX from this MOD. So our limit is there. We have given the problem statement to them. Accordingly, they can try to furnish some sort of information, or they can develop some tools with the help of academia, with the help of any colleges or reputed institution from India. That is the part of the NCRIC, that is the one of the vertical under I4C. And the last very important, that is called Joint Cybercrime Team. आपको पता है, जब भी कभी भी आप इंटरपोल की रिपोर्ट पढ़ेंगे या यूरोपोल की रिपोर्ट पढ़ेंगे, वहां पे कोई सिंगल पुलिस काम नहीं करती है, मल्टीपल कंट्रीज की पुलिस काम करती है। मतलब अगर एक ऑपरेशन को बस्ट करना है तो आप ये मानिए कि 17-18 स्टेट की पुलिस, 30-40 फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर, 200-300 पुलिस ऑफिसर, 20-25 लॉयर्स, तब जाकर के एक चीज, एक निचोड़ निकलता है कि किसको कब बस्ट करना है। अब ये बताइए कि अब इंडिया में इतने सारे स्टेट्स हैं, डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैं, जब आपस में सामंजस्य नहीं रहेगा तो इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगा? कोई लीड अगर हमें मिल रहा है वेस्ट बंगाल से, तो हमें तो लीड चाहिए ना वहां से कि सारे सिम अगर इशू हो रहे हैं। आपको पता है जमतारा के बाद दूसरा साइबर का गढ़ कौन सा है? दैट इज नूह, मेवात के पास, हरियाणा में। और ये चीजें आज नहीं, 2018-19 से चल रही हैं, पर न्यूज में अब पॉपुलर हुआ है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द इंटेलिजेंस विच वी हैव क्रिएटेड। अब आपने रिपोर्ट किया 50 लोगों ने, सबके टावर स्टडी की गई, सिम इशू हुआ नागपुर से, बट टावर का जो लोकेशन सारे मिल रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं? मेवात, भरतपुर, नूह एरिया से, शेवपुर, ग्वालियर के पास से। तो जो फ्रीक्वेंसी है, जो मैक्सिमम है, बेसिकली ऐसे क्यों? बिकॉज द डेटा, तो डेटा का यूज भी किया जा सकता है, मिस यूज भी किया जा सकता है। सो दिस इज अ गुड यूज ऑफ द डेटा विच वी
trying to focus. So what is happening in JCCT? JCCT में हमने कुछ स्टेट को चूज करके 4-5 स्टेट का एक टीम 4-5 स्टेट का एक टीम बना करके हमारी वेरियस मीटिंग्स होती हैं, इंट शेयर करते हैं. दैट इज अ पार्ट ऑफ joint cyber crime investigation. If SP Alwar want to talk SP Nagpur, then there's no interference of DG. SP can talk, they can able to provide manpower, logistic support or IO basically to travel. Sometimes city DM is also very important to permissions to do any help like this. So our major agenda is what? If we do proper coordination, then definitely we can reduce these concerns. Otherwise क्या होगा? हम जमतारा सीरीज देखेंगे 2011 की पुरानी सीरीज और हम सोचेंगे जमतारा ही सब कुछ है. बहुत पुरानी खेल है वो. आजकल लोग कॉल से लूट नहीं रहे हैं, आजकल वो आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं. जैसा बताया इन्होंने कि आपको ऐसा ल्यूर किया गया. ल्यूर मतलब ऐसा सिंपल है, सोशल इंजीनियरिंग में एक ह्यूमन टैक्टिक्स है कि अगर हमें कोई चैट करता है, हम कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, उस एप्लीकेशन की परमिशन ही सब कुछ हमारे लिए जा रही है. अब मैंने एग्जांपल लिया लूडो गेम का. आप लूडो गेम सर्च कीजिए गूगल प्ले स्टोर में, हेल अमाउंट ऑफ लूडोज आर देयर, बट सही लूडो कौन सा है? करेक्ट. अगर हमें सर्च करना है एग्जैक्टली की न्यूज, हमें ये चेक करना है कि जो न्यूज आती है, आर्टिकल्स आती हैं, या फिर ट्रेड सीक्रेट पता करना है, या फिर कुछ भी आप ले लीजिए, तो कहीं ना कहीं उस एप्लीकेशन का डेवलपर वो डेटा कहाँ रिटर्न कर रहा है, कहाँ पे होस्ट कर रहा है, किस कोई भी, मैं भी क्रिएट कर सकता हूँ एक एप्लीकेशन जिसका नाम है पाकिस्तान जल बोर्ड. So they can think it's a things are there. So we'll not reveal more information like this, but similar things are there where we should know who is there. It's now the situation is not about the angel Priya. The situation about the AI. हम जिससे बात करते हैं वह लड़की नहीं हो या लड़का जरूरी नहीं. क्या होता है, चैट जीपीटी बैठ के बात कर रहा हो, उससे हम पूछ रहे हैं भैया दिल्ली में कनाट प्लेस से मिले शाम को, बट ही और शी इज सेइंग दैट सॉरी आई कांट एबल टू मीट, बिकॉज वो तो एआई है. तो आज के परिवेश में, सिचुएशन में वी आर thinking about the thing which we are doing, that is not sufficient, that is completely the cons of this technological aspect which we have to study. अब ये बताइए, जब legal fraternity में अगर emerging threats, emerging trends, emerging चीजों को जब तक नहीं जानेंगे, हम ये नहीं जानते कि मेटावर्स के NFT को लेकर जो लेटेस्ट जजमेंट हुआ उसमें क्या वीकनेस थे, कोई कंपनी है उसके क्या वीक पॉइंट्स थे, NFT कैसे काम करता है, फॉर एग्जांपल नॉन फंजिबल टोकन्स एज वेल, या फिर मेटावर्स कैसे वर्कआउट करता है, या फिर कोई भी हाई क्राइम जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का या मैलवेयर का यूज किया गया, जहाँ पे CNC C2 का यूज किया गया, हम कैसे उसको वर्कआउट कर पाएंगे. तो समटाइम वी हैव टू अपग्रेड आवर नॉलेज एज वेल इनटू दिस एरिया, एंड वी हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड व्हाट द लीगल थिंग्स आर जो हमें सीखना चाहिए. तो टेक्नो लीगल जो कॉम्बिनेशन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एरिया दैट वी ट्राइंग टू बिल्ड फ्रॉम JCCT. एंड द चैलेंजेस, एमलेट में जब डेटा मांगा जाता है 1000 दिन के बाद, एक ऑफिशियल कंसर्न है कि लगभग 1000 दिन लग जाते हैं प्रॉपर्ली डेटा डिस्क्लोज होके आने में, यहाँ से जाके CBI से, इंटरनेट डिपार्टमेंट से, उस कंट्री का नोडल, उस कंट्री का डेटा, और यहाँ पे 1 सेकंड में IP चेंज होती है. इफ यू हर्ड अबाउट फास्ट फ्लक्स DNS द कीवर्ड, इट इज अ सिंपल, आपने एक लिंक क्लिक किया किसी और IP पे खुलेगी, 2 मिनट बाद किसी और IP पे खुलेगी. IP इज लाइक changes in various things. So I hope you heard, you got to know about the sense of what exactly is I4C, and the verticals are there, research are there, investigatings are there, advisories are there, which we are trying to pull. We are disseminating to all the DGs and all the CAPF DGs, including we are sending to all the ministries. Like we do have ministry, we do have divisions in department, you can say in defense cyber agency is there. They are also the part of this, and different all the organization, those जिसके पर्वी में जो चीजें आती हैं, that is there. So that is about the I4C perspective. Now, second is, you mentioned about the IFSO. IFSO is a part of I4C. So that is NCFL actually. IFSO, can you explain what exactly? So you have mentioned about the fusion center that is in Dwarka. So IFSO is there, which is a cybercrime Delhi police thing. So that also comes in I4C as well, because sometime when we send any report, so officially Delhi police is also with us in the ministry. So they have separate department, those who dealing with these all things. तो आप एग्जांपल लेते हैं कि मोबाइल पे एक लिंक आता है फिशिंग का, SMS का, जो ये कहता है कि आपको रिडीम कोड करना है या फिर KYC अपडेट करना है, कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, और आपको ये भी आता है कि आपके अकाउंट पे सस्पिशियस एक्टिविटी देखी गई, जो आपका ईमेल या जीमेल था, ये मैसेज आपके मोबाइल पे आया. दोनों का जो अटैक वेक्टर या अटैक मीडियम वो एक SMS था. करियर कौन सा था, एयरटेल, जियो, जो भी है, पर मैसेज तो आया आपको. उस मैसेज जो लिंक होगा, उस लिंक को जब क्लिक करके ओपन करते हैं, तो पहला लिंक जो है
केवाईसी अपग्रेड करने के लिए, उसमें आपको बैंक का वेबसाइट खुलेगा, क्लियर, और दूसरे में आप क्लिक करते हैं तो आपको ईमेल के लिए कोई वेबसाइट खुलेगी। दोनों के केस में एक में आप फाइनेंशियल फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं और एक में आप मैलवेयर डाउनलोड कर रहे हैं। तो केवाईसी वाले में बैंक की वेबसाइट खुली जहां फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है, और दूसरे वाले में जो आपका लिंक था ईमेल का, उससे क्या पता कोई नैरेटिव नॉन फ्रेंडली कंट्री से हो रखा हो और उससे जो एपीके या फिर ईएक्सी फाइल आपके सिस्टम पे डाउनलोड होता है। तो दैट इज, दोनों के सेम मेथड था, बट एक साइबर क्राइम की ओर ले जा रहा है, एक साइबर सिक्योरिटी, साइबर इमर्जिंग थ्रेट्स को लेकर ले जा रहा है। एक के केस में फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है, दूसरे केस में हनी ट्रैप कह सकते हो आप, एक बड़ा अच्छा टर्म है, एक्सटॉर्शन के लिए, या फिर डेटा एक्सफिल्ट्रेशन के लिए, अगर कोई डेटा चोरी करने के लिए कोई एजेंट अगर डिप्लॉय करना चाहता है आपकी मशीन में देयर, तो समवेयर अ सिंगल एसएमएस that are doing a havoc in this perspective. If you know exactly, we don't have to click, we don't have to work. तो एक टर्म होता है पॉलीमॉर्फिक। पॉलीमॉर्फिक मतलब ये होता है नॉर्मली कि ऐसे कोड जो एंड्रॉइड में भी चल सकते हैं, लिनक्स में भी चल सकते हैं, मैक में भी। तो आप ये मत सोचिए कि हम, क्योंकि एंड ऑफ द डे बैकएंड में सारे कोड हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर रनिंग विद सॉफ्टवेयर्स एंड एक्सप्लॉइट कैन बी देयर। सो इफ एनीथिंग यू आर डूइंग लाइक नाइट टाइम, आप अगर एक्सेस करते हैं मोबाइल, आप एनआईसी नेटवर्क में नहीं है या फिर आप प्रॉपर इंटरनेट पे नहीं है, ओपन वाईफाई पे हैं, तो एनीबॉडी कैन एबल टू स्निफ, और मे बी you don't have a proper antivirus, so that can able to download and that can able to easily create a connectivity. So like here we got one IP, इस IP पे कितने सारे नेटवर्क्स होंगे इस बिल्डिंग में, बहुत सारे होंगे, काफी जोन हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, we not look for the hi-fi technology, first we have to understand our mindset. So the lesson here that is called PPT, it's very common, हर जगह यूज किया जाता है, people process technology। अब पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी अपने आप में एक डिफाइंड टर्म है, पीपल लाइक यू पीपल प्रोसेस लाइक द नॉर्म्स, द टेक्नोलॉजी विच इज बिहाइंड देयर, एंड टेक्नोलॉजीज अगेन लाइक द हार्डवेयर्स। हम डिपेंडेंसी मेंटेन नहीं कर सकते सॉफ्टवेयर्स के ऊपर, क्योंकि एंटीवायरस सिग्नेचर पे काम करता है और ह्यूरिस्टिक बेस्ड बिहेवियर पे। अगर हैकर्स को मालूम है कि इस डिपार्टमेंट में मैकेफी यूज किया जा रहा है, तो हैकर्स कोई ऐसा एंटीवायरस को तोड़, उसको बाईपास करने के लिए कोई ऐसा कोड बना सकते हैं जो मैकेफी एंटीवायरस को बाईपास करके सिंपल आ सकता है। इतना हाईफाई चीजें छोड़िए, सिंपल से जो अपडेट आते हैं माइक्रोसॉफ्ट में, अगर वो आप अपडेट नहीं करते तो इजीली कोई भी अटैक करके आपको, रैंसमवेयर जो एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, आपको पता है, सोलर इंडस्ट्री, एम्स, दुनिया भर के इंसिडेंट होते रहते हैं। बहुत से इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं होते हैं, पर साइबर क्राइम पे हमारे पास रिपोर्ट साइलेंटली आते हैं, क्योंकि अगर वो रिपोर्ट पब्लिक हो गए तो शेयर मार्केट तुरंत, ये भी एक रीजन होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। पर कहीं ना कहीं जब क्रिप्टो में पैसा दे देता है तो मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीजें इनिशिएट हो जाती हैं, और हैकर जब पैसे कमा लेता है तो गूगल करके जान जाता है कि वीपीएन कैसे परचेज करना है। जैसे आज आप लोगों ने माई एक्टिविटी देखा, अब आप जाके वहां से डिलीट करेंगे, ना कहिए कि ऐसे कोई क्रिमिनल भी जान जाए तो अपनी फुटप्रिंट्स को इवेड डिलीट कर सकता है। तो समटाइम्स thorough knowledge is also dangerous for us to explain the modus operandi during a police is doing in biting, कि अरे हमने तो इसको ऐसा पकड़ लिया। आपको पता है कि चोर भी वही YouTube चैनल देख रहा है, उसे मालूम है कि गिरोह कैसे पकड़ा गया, तो जब उसने जब जान लिया सब चीज, tell you honestly, this is not the only way. There are hundred such ways. Exactly. So the various ways are there. शायद so तो वही चीज है कि once the content has been posted online, the ways we have to understand. तो we are guiding कि IP और नंबर के अलावा भी दुनिया जिसको हम ट्रैक कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, वेरियस थिंग्स आर देयर, बट वो चीज हमें मालूम होनी चाहिए, वो चीजें क्रिएट होनी चाहिए। डिजिटल वेलबींग, हाउ अबाउट डिजिटल वेलबींग? एक ऑप्शन है, एक एप्लीकेशन है आपके एंड्रॉइड फोन में, डिजिटल वेलबींग। आप खुद चेक कर सकते हो कि आप कितना समय अपने फोन पे व्यतीत करते हैं, किस एप्लीकेशन में। दैट इज आल्सो वेरी गुड थिंग विच इज इन एंड्रॉइड। अब ये बताइए कि एंड्रॉइड डिजिटल वेलबींग, इट्स an application within that एंड्रॉइड फोन में। अब सिंपल सा है कि जब इंजन ही बाहर का है, इंजन मतलब गूगल है, एंड्रॉइड ये खुद ही जब बाहर का है, तो हम कितने भी एप्लीकेशन ना यूज करें, बट डेटा तो हमारा जा ही रहा है ना, तभी ये चीजें होती है। तो डेटा सारा कुछ है जिसको सर्विलांस करना हो फॉरेन कंट्रीज के पास, तो उनको जब भी कुछ करना हो, इजिली दे कैन एबल टू गेट सम MOUs, सम privacy, some policies are there which is not on paper but they do have all the things. So when we study these एप्लीकेशंस और दिस मिथ बेसिकली, या तो कंप्लीटली नेट से डिस्कनेक्ट रहो, आप सेफ हो। आप डिस्कनेक्ट भी रहोगे तो जो किसी ने फोटो डाल दी कि पीएचडी चैम्बर में इतने लोग अवेलेबल थे, आप भले ही सोशल मीडिया प्रेमी ना हो, बट आपकी फोटो डाल दी, कोई ट्रैक कर रहा हो कि भैया कर्नल सर भी थे, ये भी थे, सब लोग थे, एक्सपर्ट्स भी थे,
they got to know na. So sometime sharing information from third party as well create, and in Facebook perspective, Meta के जितने apps हैं, Insta हो चाहे कोई भी हो, they have very beautiful AI recognition concept. They can able to scan that कि ऐसे content कितने जो CSAM में आते हैं, जो CP में आते हैं. आईफोन ने निकाला भी था एक आर्टिकल जिसमें वो फोन को चेक कर सकते थे, बट उन्होंने बोला कि प्रिवेसी हमारी वो हो रही है, ब्रीच हो रही है. सो द थिंग इज व्हाट OSINT, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस. अब एक वेबसाइट है, कैन यू सर्च वेबसाइट कॉल हैव आई बीन पॉन्ड. अब टाइप कीजिए वेबसाइट, तो आप भी चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल पे. सिंपल वेबसाइट है, अपने मोबाइल पे भी आप चेक कर सकते हैं. बस ये सिर्फ इतना बताएगा कि आपकी जो ईमेल आईडीज हैं वो कहाँ कहाँ लीक है. So the website is called this. This website you can Google like this. Question is here. ये कुछ एक ऐसी वेबसाइट है जो जब भी किसी की ईमेल आईडी हैक होती है वो कहाँ कहाँ हैक हुई एटलीस्ट प्रोवाइड करता है. जिनकी वेबसाइट या जिनकी ईमेल आईडी अगर यहाँ नहीं मिलती है, इसका मतलब ये नहीं कि उनका डेटा हैक नहीं हुआ है, इनके डेटाबेस पे नहीं है, हो सकता है. So point is here like this. If you open the website, a simple, and if you open this. So I'm using one email ID various places since 15 years. So let me see. You can check from your angle, like अपने मोबाइल पे आप अपनी email ID check कर सकते हैं. So for example, I'm checking my one, and I got to know my email ID was found or in how many hacks? 12, 3, 15 जगह पे मेरी email ID हैक हुई है. मतलब हैक नहीं कह सकते, मतलब उन वेबसाइट पे मेरा डेटा पाया गया. जैसे पहली वेबसाइट 000 वेब होस्ट, दूसरा दिस, तीसरा बिग बास्केट. अब इसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस बताता हूं मैं. अगर ये डेटा किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी सर्विलांस ऑर्गेनाइजेशन के पास होगा तो भी इस डेटा ब्रीच से मेरा डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, IP एड्रेस उस टाइम फ्रेम का पा सकता है. इंटरेस्टिंगली, हर्ड अबाउट डोमिनोज ब्रीच, डोमिनोज डेटा लीक. डोमिनोज में तो ये हुआ था कि लोग ये भी जान सकते थे कि मैंने कितने का डोमिनोज से पिज्जा मंगाया था और किस एड्रेस पे. सो समटाइम दिस डेटा ब्रीच इज नॉट अंडर लाइक गवर्नमेंट सुपरविजन. ये हैकर्स भी यूज कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज भी यूज करती हैं, जिसको कहते हैं कम्युनिकेशन या लिंकेज एनालिसिस. व्हेन वी डू सोशल बियरिंग पर्सपेक्टिव और सेंटिमेंट एनालिसिस पर्सपेक्टिव, लाइक, तो समटाइम मेनी हैकर्स दे डोंट यूज डार्क वेब, दे यूज नॉर्मल वेबसाइट. So to show this one example, it's a one example only. There are various examples like he's shown something I have. So we हालांकि एक घंटे में रामायण खत्म नहीं हो सकती है कि नहीं? आप मानते नहीं मानते हैं? एक घंटे में रामायण खत्म हो जाए तो फिर तो some pointers are there. तो data is a new oil, is very old concept. अब हमें ये जानना है कि हमें क्या क्लिक करना है, क्या क्लिक नहीं करना है, क्या करना है, तो आप खुद देख सकते हैं. इसका सोल्यूशन ये है, अगर ऐसी ब्रीच होते हैं तो अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड चेंज कर दीजिए, सेम पासवर्ड मत यूज कीजिए. कितने लोग 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज करते हैं, 2 स्टेप वेरिफिकेशन यूज करते हैं? सारे लोग यूज कीजिए. अगर आपका अकाउंट हैक भी हो जाता है, एटलीस्ट ऑथेंटिसिटी के लिए आपके OTP तो आए फोन पे. यस और नो? आप 3-4 महीने में चेंज कीजिए पासवर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड्रॉइड मोबाइल के लिए कोई जरूरी नहीं एंटीवायरस हो, बट फालतू एप्लीकेशन इंस्टॉल मत कीजिए, क्योंकि जब पहले क्या था, एंड्रॉइड फोन नहीं था, तो सर मैं कॉल कर रही हूँ बैंक ऑफिसर बन के, स्वीट वॉइस एंड दे टेक OTP. अब क्या है, आपके फोन पे पहले से ही एक फर्जी एप्लीकेशन है जिसके अंदर SMS फॉरवर्डर या SMS रीड और राइट का परमिशन है. इस कॉल्ड स्पाईवेयर, सिंपल भाषा में. अब हैकर को क्या चाहिए? हैकर ने पहले ही आपका डेटा ले रखा है. कहां से? बैंक को पैसे दे करके हैकर्स लोग डेटा ब्रीच ले करके आपको ही कोई ऐसा फॉर्म बना के भेज दिया कि KYC फॉर्म में अपडेट कीजिए, और खुद नीचे लिखते हैं कि बैंक कभी कुछ नहीं पूछता. खुद फोन करके बोलते हैं बैंक कुछ नहीं पूछता, और खुद ही पूछ रहे हैं सब चीज. सो दैट इज कॉल्ड सोशल इंजीनियरिंग टैक्टिक्स. सो दे डू हैव ऑल द बैंक डिटेल्स. नाउ दे डू व्हाट दे नीड ओनली द OTP. ईमेल हैक किया तो या SMS हैक किया तो जब SMS ऐप के माध्यम से आपके लूडो एप्लीकेशन के SMS रीड उसने कर लिया तो क्या होगा? वो उसको OTP चाहिए, OTP डाला, एंड दे कैन एबल टू साइफन योर मनी एंड दे डिलीट योर दैट एप्लीकेशन. अब 2 दिन में डिलीट भी कर दिया. इन्वेस्टिगेशन में जब जाएगा IO के पास, IO क्या चेक करेगा? डू यू थिंक इवन दो ही विल गो दैट कि इसमें ऐप था, क्या था, इसको मतलब ही नहीं है.
सम टाइम वी डू स्टडी कि आपने कुछ किया तो ब्राउजर हिस्ट्री में दिखता है कि हाँ उसने सर्च किया था जिसका नाम था ब्यूटी कैम फिल्टर। और ब्यूटी कैम फिल्टर ऐसे एप्लीकेशन थे जो बहुत ज्यादा चाइनीज थे, या फिर कोई एप्लीकेशन, या कोई भी अभी एडमिशन हो रहा है तो एक कोई सिविल स्कोर चेक करना चाहता है कोई, या वेरियस एंगल्स आर देयर, ये हर तरह से चीजें आती हैं, काफी मूवीज बनती हैं, काफी सीरीज बनती हैं और सारी चीजें यहीं से मिलती हैं। सो एआई बेस्ड मालवेयर्स आर देयर जहां पे टेम्पलेट यूज किए जाते हैं, उस पर आप स्टडी कर सकते हो। चैट जीपीटी पर्सपेक्टिव चीजें काफी ज्यादा हैं, ये हमारे लिए एक वरदान भी अभिशाप भी है क्योंकि मैक्सिमम नेगेटिविटी थिंग्स आर देयर एज वेल। ये पूरा खेल डेटा का है, हम जितना सर्च करते हैं उतना डेटा ट्रेन होता है, डेटा सेट बनते हैं तब जाकर के प्रॉपर रिजल्ट्स आते हैं। हम ही सर्च करते हैं तो वो लिखते क्या है कि हम डेटा स्टोर नहीं करते, देन हाउ दे वर्किंग। इसके बाद मोबाइल एप्लीकेशन, सबसे मेजर पॉइंट है मोबाइल ऐप को लेकर के। मोबाइल ऐप इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट परमिशन दे आर आस्किंग। थर्ड पार्टी एप्स इंस्टॉल जैसे नहीं करना होता ये सारी चीजें। मैलवेयर इज व्हाट? मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स। सो मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स कैसे हो सकते हैं? मान लीजिए आपको जजमेंट डाउनलोड करना है, गूगल सर्च किया, आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है, या फिर अभी मूवी कौन सी आई है, कोई मूवी ले लीजिए लेटेस्ट वाली, केरला स्टोरी, गार्डियंस ऑफ समथिंग, एग्जैक्टली। एज फैक्टर्स लाइक सबके अपने इंटरेस्ट होते हैं, हम भी कुछ नेटफ्लिक्स का सर्च कर रहे हैं फॉर एग्जांपल एचडी में। अब कंटेंट सर्च करने के बाद हमें नहीं पता होता वेबसाइट कौन सी है, एक यूट्यूब पे कोई डाल दिया उस नाम की, बट यूट्यूब पे जब वीडियो खुलती है तो कुछ और होती है, पता है एक क्लिक से भी पैसे कमा रहे हैं वो लोग, तो भले ही शाम को वेबसाइट बंद हो जाए, यूट्यूब पे एड्स आती हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ आईबी इज देयर इन फंड ब्रॉडकास्टिंग, दे कम विथ न्यू थिंग्स, ऑलवेज अपडेट की ये नहीं करना वो नहीं करना है। पहले आप जब एड सुनते थे कि कौन सा एड, जब ये LIC प्रीमियम या कुछ ऐसे कि जोखिम भरा होता है, पता नहीं कितना फास्ट बोलता था, करके बोल गया सबसे फास्ट। सो सिमिलरली नाउ व्हाट इज हैपनिंग, अब थोड़ा धीमे बोलते हैं, ये सारी चीजें जोखिम भरी हैं, 18 वर्ष की उम्र, तो से भी सिमिलरली थिंग्स आर देयर, अभी वो चीजें अपडेट हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें आ रही हैं आप लोग के माध्यम से, दुनिया भर की चीजें जब भी होती हैं, दैट इज देयर। लीगल चैलेंजेस हैं नो डाउट, बट लीगल चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए टेक्नोलॉजिकल एंगल जो है और अवेयरनेस और कैपेसिटी बिल्डिंग है, दैट वी आर डूइंग पैरेलली, बट स्टिल वी हैव सम सॉर्ट ऑफ various meetings and various things comes under MHA when with the help of IIPA or different organization we trying to ask, and these things are there. How many of them use that cam scanner? कितने लोग यूज करते हैं? वेरी गुड, कितने लोग यूज करते हैं? अब प्लीज मैंने ऐसे पूछ दिया तो इस कैम स्कैनर एक चाइनीज एप्लीकेशन है। कैम स्कैनर पे जब हम फोटो स्कैन करते हैं तो सर्वर पे पहले जाता है हमारा इमेज, JPEG इमेज, वो कन्वर्ट करता है PDF या DOCX में जो भी है, फिर वहां से हमारे पास एक आउटपुट आता है। मतलब मैं अगर कुछ स्कैन करना चाहूं, मैं अपने दोस्त को शेयर नहीं कर रहा हूं, बट मैं रिलाय कर रहा हूं कैम स्कैनर एप्लीकेशन पे। हमारा डेटा मैक्सिमम गवर्नमेंट का ऐसे काफी डेटा भी बाहर है जो कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट थे, इस पर हमें जब इनपुट मिली मिनिस्ट्री से, MOD से, हमने इसको बैन किया, स्टडी किया, तो हमने देखा इसकी जो कनेक्टिविटीज हैं वो किसी और कंट्री में आज भी PDF मर्जर, PDF स्प्लिटर लोग गूगल करते हैं। और लॉ डोमेन में मैक्सिमम जजमेंट्स जो होते हैं जो पब्लिक नहीं होने चाहिए या फिर जो कॉन्फिडेंशियल FIRs होती हैं वो भी इस तरह से लीक होते हैं। तो मान लीजिए किसी कंट्री में फंड किया गया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कि सिर्फ आप एक वेबसाइट बनाओ जहां पे एक ऐप डाल दो पीछे जो कनेक्ट करे, कन्वर्ट करे, ये कह लीजिए PPT डिजाइन कर दे। सो समटाइम्स नथिंग फ्री। तो जैसे मॉर्निंग में कुशल भाई ने कहा कि नथिंग इज फ्री, आप प्रोडक्ट बन रहे हैं बेसिकली आप, तो वो एकदम से क्लियर चीज है कि जो चीज फ्री है फ्री नहीं है। व्हाट्सएप भी फ्री नहीं है, वरना वो भी ऐड देता है कि ये करके, दे नो थिंग्स, क्योंकि व्हाट्सएप इंस्टा पे जो क्यूरेटिव इंफॉर्मेशन होती है लेटेस्ट, जिसको कहते हैं एक्शनेबल इंटेलिजेंस, वो किसी ऐप में नहीं होती। हम भले ही व्हाट्सएप पे बिंदास रहते हैं, बट हमारे चिट्ठा जो निकलता है हमारा रियल में, इंस्टाग्राम में, किसी और प्रोफाइल में, दे हैव ऑल द डेटा। सम टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इंफॉर्मेशन और व्हाट इंटेलिजेंस, थ्री थिंग्स आर देयर, डेटा, इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस, वो क्या है बेसिकली और कितना हमें यूज मिसयूज करना है। आई थिंक आई हैव टेकन मच टाइम रिगार्डिंग द सेम। द एंटायर concern is about the information warfare, and if you ask me the term that's called economic warfare, और कहीं ना कहीं हमारे देश को तोड़ रही हैं हर तरह के माध्यम से, और हमें
जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक हम इस तरह की कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे। हम जब तक यह नहीं जानेंगे कि हमें क्या नैरेटिव इनिशिएट करना है, हमें कहाँ क्लिक करना है, क्या अपडेट करना है, किस पे रिपोर्टिंग करनी है, तब तक ये चीजें नहीं हो पाएंगी। सो पीपीटी एंड पीपीपी, द फाइनल कंक्लूजन, सो पीपीटी इज अ पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी दैट इज वी रिक्वायर्ड। टेक्नोलॉजी अच्छी है बट बंदे ही, पीपल ही ऐसे हैं कि जो काम नहीं करना चाहते हैं, तो वो प्रॉपरली वर्कआउट नहीं हो पाएगा। बंदे ताबड़तोड़ है काम करने के लिए, टेक्नोलॉजी ही नहीं, फंड ही नहीं है, नहीं हो पाएगा। तो 3 फैक्टर जब प्रॉपरली नहीं आएंगे तब तक चीजें नहीं हो पाएंगी। और तीसरा आपका है सेकंड जो है पीपीपी, दैट इज अ पब्लिक प्राइवेट partnership, that is also there. I can't say that entire things can be done by government. That's the reason only I foresee have a very set of team from ministry, from military, from police, from legal, from experts, SMEs from different domain. Then the team come, then they try to study and understand these all things. So PPP is always very important in any fraternity. Then only things can be work out. So that is from my side. I know I have given multiple insight regarding the I4C matters as well. And many things are there to explain in this short interval of time. But your awareness is very important. And that is called effective awareness. Done from my side. Thank you, Jay. Thank you very much, sir. Thank you. I had a couple of questions. You enlightened us on so many different aspects. If you had to ask, give some precautions which we must take as a day-to-day on our private phones or your mails, what would be the 2-3 things you would say? Change your passwords regularly, and I mean, how do we prevent a few things? Because you know deeper into the subject on a practical side of it, but a lot of us here will not know the dynamics behind what it is. We only read and we don't experience it all the time. So if you had to suggest a few tips for everybody. Oh, so very well. I mean, it's not very hi-fi. अगर हम फोन की बात करते हैं तो सबसे पहले तो फोन में जितने भी अननेसेसरी एप्लीकेशंस हैं उसे तो आप अनइंस्टॉल ही रखिए। फोन से दूर भी नहीं हो सकते क्योंकि एक फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब फोन रखा हुआ है, अब लगता ही है कि व्हाट्सएप पे क्या आया होगा ग्रुप पे, है कि नहीं? बड़ी Every 5 minutes that's a disease. वो थोड़ा मस्ती है। हम उस क्या, मेरे पास वर्ड नहीं आ रहा, बट हम उस युग की ओर जा रहे हैं। उसमें गलती नहीं है, वो ट्रेंड है, फैशन एक्चुअली, पर उसके कंसिक्वेंसेस ये नेगेटिव भी हो सकते हैं कि फैमिली रिलेशनशिप जो भी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आई वुड नॉट लाइक टू पॉइंट, बट अवेयरनेस पर्सपेक्टिव, इफ वी डिसेबल अवर नोटिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा डिस्ट्रैक्शन कम होगा। वरना फोन में टिंग 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 टिंग, अरे क्या खुला? Either you can disconnect your internet if you are busy somewhere. If you, so unnecessary notification, unnecessary application, that is very very important to know. That is point 1. ऐसा नहीं है कि एंड्रॉइड सेफ नहीं है या फिर कुछ भी सेफ नहीं है। अगर आप नेट से जुड़े हुए हैं, कुछ भी सेफ नहीं है। एलेक्सा की बात की जाए, इनका सर का मैंने सुना था, हम एलेक्सा में बोलते नहीं रहते ये एलेक्सा ये प्ले करो वो करो। एलेक्सा पूरी लाइब्रेरी क्रिएट करता है, उसे मालूम है कि हमें क्या जाना है। हम घरेलू बातें भी करते हैं, वो सुनता रहता है, सारा रिकॉर्ड हो गया। करेक्ट। आप फोन के अंदर आप कुछ सर्च कीजिए इंस्टाग्राम में, आपको वो चीज रिफ्लेक्ट होती है फेसबुक में। कुकीज इंटेलिजेंस, सारा गेम कुकीज का है। जीडीपीआर ने ला करके खेल लिया। जैसे एलेक्सा का जिक्र किया सर ने, एलेक्सा पे जाके आप पूछना हुआ माय, वो बता देगा कि आप कौन। अब इंटरेस्टिंग इसमें ये चीज है कि इतने लोगों का वॉइस डेटा एग्जैक्टली मैपिंग रखना आज की डेट में वर्ल्ड में किसी के पास इतना डेटाबेस नहीं है जो कि एलेक्सा के पास है ना। दिस कैन बी मिसयूज हेवीली इफ गोज टू द रॉन्ग हैंड्स। मैं आपकी सिर्फ 3 सेकंड की आवाज सुन के पहचान लेता हूं कि आप कौन इफेक्टिवली। इतने क्राइम केसेस होते हैं वहां पर, पॉजिटिवली भी यूज हो सकता है। दिस शुड वी शुड, एंड दिस इज नॉट ओनली विद एलेक्सा, गूगल भी रिकॉर्ड कर रहा है दुनिया भर के। अभी तो व्हाट्सएप का अल्लाह हो गया, सीरी भी है, बहुत सारी चीजें इनेबल कर दे। ऑल हैव योर वॉइस एंड दे कम विद लाइक कि सर आपके बेटरमेंट के लिए यूज किया जा रहा है, आप प्लीज एक्सेप्ट कीजिए। हाँ भाई करो, क्यों नहीं, हम भी चाहते हैं बेटरमेंट हो। पर बेटरमेंट के चक्कर में जब वो था सेक्सुअल रिलेशनशिप भी ले जा रहा है हमारा, भले ही मैं एंजल प्रिया में लड़का बन के बात कर रहा हूँ, देन दे डू हैव एवरीथिंग। सो पॉइंट 3 इज व्हाट, आप अगर पैटर्न लॉक यूज करते हैं एंड्रॉइड फोन में और गैलरी लॉक यूज करते हैं, तो प्लीज यूज डिफरेंट पासवर्ड। इट शुड नॉट बी गोल ABCD, ऐसा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी डिफरेंट और चेंज करते रहिए। सो बोथ पासवर्ड शुड बी डिफरेंट। आज अगर आपका फोन गुम जाता है, डू यू हैव बैकअप? आप बैकअप रखिए। बैकअप फोन के अंदर भी एक होता है, मैं सिर्फ गूगल ड्राइव की बात कर रहा हूँ, दैट इज ओके। बट टॉकिंग अबाउट थर्ड पार्टी बैकअप, लाइक जो ओप्पो फोन के चाइनीज बैकअप होते हैं, ये चाइना पे हमारा डेटा जा रहा है। तो मैं नहीं कहता गूगल भी सेफ है, आप अगर सेव करते हो उसको भी इंक्रिप्ट करिए।
जो कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं या रखिए ही मत, ये सेपरेट बैकअप की। तो बैकअप इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे कंप्यूटर हो चाहिए। रैंसमवेयर के केस में लोग सी ड्राइव का डेटा, डेस्कटॉप का डेटा बैकअप डी ड्राइव में रखते हैं। सीओ चाहे डी, वो कंप्यूटर एक स्टोरेज है, जब सिस्टम का लंका लगेगा मतलब पूरा जाएगा। पर बहुत जगह तो ये देखा गया है कि जो स्टोरेज का बैकअप है उसको भी कनेक्टिविटी रखते हैं, मतलब एक पेन ड्राइव या स्टोरेज भी दोस्त टीवी का है, उसको भी कनेक्टिविटी में ही लैपटॉप में रखते हैं। सिस्टम हैक हुआ, इट कैन गो थ्रू दिस थिंग। सो बैकअप शुड बी सेपरेट, ऑफलाइन बैकअप periodically. Important data, that is very important. How safe is cloud? क्लाउड पर्सपेक्टिव, अब क्लाउड की बात की जाए, माई एक्टिविटी पे पूरा चिट्ठा दिख जाता है कि व्यक्ति ने क्या सर्च किया, क्या डाउनलोड किया। आप खुद चेक कीजिए, पासवर्ड चेंज कीजिए 3-4 महीने में, और जो फालतू की चीजें हैं आप डिलीट कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। जहां पे आपके एप्लीकेशन कनेक्टेड है, प्री कनेक्टेड, उसमें रिवोक एक्सेस एक ऑप्शन होता है। जैसे आपने 3 साल पहले कोई ऐप यूज करने के लिए गूगल का ऑथेंटिसिटी दे दी थी ट्रू कॉलर के लिए, तो सारी चीज चली गई, तो रिवोक एक्सेस कर सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव। एंड लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट जो मोबाइल पे है, हम वही चीज शेयर करें जो ऑथेंटिक हो। थिंक मतलब इट इज रियल और फेक व्हाट, क्योंकि आपके शेयर करने से हनुमान जी नाराज नहीं हो जाएंगे मंगलवार के दिन। वो नहीं होता एक फोटो शेयर करो तो हनुमान जी नाराज हो जाए, बहुत सा ट्रेंड चलता है, अब तो बंद हो गया। या लैपटॉप वितरण, फोटो एम्बलम किसी मिनिस्टर साहब की कि इसमें रजिस्टर कीजिए, ये डेटा हार्वेस्टिंग, इसको क्रेडेंशियल स्टफिंग कहते हैं। डेटा हार्वेस्टिंग, जहां पे डेटा पूरा ले जाता है, फिर बाद में स्टेप चोरी होता है डेटा क्रिएट करने के लिए। सो मोबाइल का बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या क्लिक करना है क्या नहीं करना है। मोबाइल पे हम कभी भी कुछ कंटेंट देखते हो वीडियो में तो एड्स आने लगती हैं। अपने फोन को बच्चे को मत दीजिए, अगर देते हैं तो उसकी निगरानी कीजिए, क्या डाउनलोड कर रहा है, हिस्ट्री चेक कीजिए, सडनली चेक कीजिए। समटाइम्स क्या पता आपके फोन में उसने कैंडी क्रश डाउनलोड कर लिया, पापा शाम को आएंगे उसने अनइंस्टॉल कर दिया, आपकी स्माइल में समझ सकता हूँ। सो व्हाट हैपेंड दैट टाइम, 3 बजे इंस्टॉल किया, खेल लिया, पापा आ गए, 9 बजे इंस्टॉल कर दिया। कॉन्टेक्ट को अपलोड होने में 30 सेकंड लगता है। कोई भी फोन बिना नेट का चलता नहीं, आज सारे फोन में वाईफाई और नेट है। इफ यू इंस्टॉल एप्लीकेशन, यू गॉट टू नो एप्लीकेशन का मजा नहीं आ रहा, छोटा हो यार, लोग अनइंस्टॉल कर देते हैं। पर अनइंस्टॉल में जब आपका जो कॉन्टेक्ट चला जाता है तब मैसेज आता है कि जो रमेश जो आपका कारपेंटर है, या जो दीपक आपका जो दूध वाला है, बेसिकली इसको मैं ये फोटो भेज दूं। आप सोचते हो ये फोटो कौन चैट कर रहा है मुझसे अजीब नंबर से, हम डर जाते हैं। वह पोर्नोग्राफिक कंटेंट चेहरा बदल करके न्यूड फोटो में मिक्स करके बहुत सी चीजें चलती हैं। बहुत से लोगों ने सुसाइड भी किया है, लोग पेमेंट भी कर देते हैं। पहला स्टेप हमारा होता है किस तरह के ट्रैप से बचना है, हमें इमीडिएटली ब्लॉक करना है। एक बार नहीं 10 बार, 10 बार नहीं 76 बार। उसके बाद थक जाएगा भैया कि ये बहुत खतरनाक, बड़ा सख्त बंदा है, जिसको कहते हैं सख्त। करेक्ट। सेकेंड, इफ यू कीप all the numbers as a screenshot as an evidence, then you try to upload, try to report on website called cybercrime.gov.in. अगर कोई फाइनेंशियल लूट हो गई है 1930, सर मैं दीपक कुमार बोल रहा हूँ, कहाँ से, मयूर विहार से, सर मेरा 32,000 रुपये कट गया है, मुझे 4 SMS आए थे, 10-10-10-2, 4 SMS की ट्रांजेक्शन आईडी ये है, सर पैसे कटे 3 बजे, कैसे कटा, गलती ठीक है। इतना भी कहने से गोल्डन आवर, जल्दी, ये नहीं कि आज कटे तो 2 दिन बाद आप रिपोर्ट कर रहे हैं। तो गोल्डन आवर में रिपोर्ट करने से वो अमाउंट को होल्ड कर लिया जाता है। और हमारे CF RMS या जो साइबर क्राइम पोर्टल है, उसमें हमने जो चीजें की हैं उसका रीजन यही है कि पुलिस को साइड करते बैंकिंग को डाल दिया, बैंक अपने निपटते रहे। इसको और स्ट्रेंथन करने के लिए हम AI बेस्ड या APIs को हम ऑटोमेटेड कर रहे हैं ताकि इमीडिएटली टक 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 बंद हो सके। तो जब पैसा रुक जाएगा हैकर नहीं निकाल पाएगा। बट अगर हैकर ने फिजिकली या विड्रॉ ATM से कर लिया तो RBI भी नहीं बता पाएगी, क्योंकि उसके लिए CCTV की फुटेज की आप देख सकते हो। मतलब इट्स अ हरकुलियन टास्क टू रिकवर टू दैट लेवल। तो हमें प्रण ये लेना है, डिपेंडिंग लाइक somebody know about the ombudsman perspective, they know about the dispute, तो उन्होंने टाइमली अगर रिपोर्ट कर दे तो लोग के पैसे निकलते हुए हैं। जब जान जाते कि ये लड़ लेगा, ये पैसे ले ही सकता है, पर वो 1000 में 2 लोग होते हैं, तो जो बाकी लोग उनका क्या, या उनकी 10,000 रुपए किसी की सैलरी होती है और किसी का सिर्फ टैक्स होता है जो खाने में जाता है बेसिकली जब कोई पार्टी करते हो। सो डिफरेंस समझिए। तो हमारा मेन है जो इकोनॉमी है उसको बचाना। मैं नहीं कहता कि सब बच सकते हैं, बट हम जितना अवेयर रह सकते हैं उतना जरूरी है। तो cybercrime.gov.in, साइबर क्राइम का जो टोल फ्री नंबर 1930 बिजी जाता है, यू कैन ट्राई मल्टीपल टाइम। और अगर कोई इंट या इंफॉर्मेशन है
आप I4C को लिख सकते हो, कोई शेयर करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, इंफॉर्मेशन पर्सपेक्टिव. That is the concern. That is the website CyberDost करके. I hope I have given you answer about the mobile perspective. Same for computer. Computer के लिए भी browser update करना है, Windows update करना है, अगर आप Mac update करना है, और सबसे important antivirus update करना है. Antivirus purchase कर लीजिए 700-800 रुपए का. It's not a big deal, but at least एक नॉर्मल पहरेदार बचा तो सकता है किसी रैंडम बंदे को आने से. और सबसे बड़ा मिथ है, HTTPS वेबसाइट सेफ नहीं होती हर बार. Authenticity is something else, and that is SSL. अब ये बताइए कि मैं अगर पुलिस का ड्रेस पहन के आता हूं तो क्या मैं पुलिस वाला बन जाऊंगा? इट्स अ लेयर बेसिकली. तो दैट इज अ मिथ. आजकल ट्रेंड है पिछले 2-3 हफ्तों से, जितने भी .in वेबसाइट्स हैं अक्सर इंडियन वेबसाइट कहलाती हैं, बट इसको कोई भी परचेज कर सकता है. इवन नॉन फ्रेंडली नेशन भी परचेज कर सकते हैं. इसका मतलब ये नहीं है. HTTPS सिर्फ ये बताती है कि वेबसाइट सेफ है, सिक्योर है, ऑथेंटिकेट नहीं, ऑथेंटिसिटी नहीं बताती. सो एनी फेक वेबसाइट कैन कम विद HTTPS. सो वेबसाइट की HTTPS सिग्नेचर पे नहीं जाना है. हमें बेसिकली ये जानना है वेबसाइट के जो कंटेंट है, उसकी पॉलिसीज, टर्म्स एंड कंडीशन, व्हेन यू क्लिक प्रॉपर्ली इट शोज ओपन और नॉट. दैट इज द कंसर्न टू चेक द ऑथेंटिसिटी. इट्स नॉट अबाउट द सिक्योरिटी. सिक्योर होगा ठीक है, बट थिंग्स लाइक दैट. That is about the HTTPS part. Yes, sir. मैडम आप कुछ बोल रहे थे. HTTPS और HTTP. HTTP is they don't have SSL. They don't have certificate. मतलब डेटा अगर उस लैपटॉप उस यूजर से सर्वर पे जाएगा तो अनइनक्रिप्टेड या क्लियर टेक्स्ट में जाएगा. But when you talk about HTTPS, it's encrypted SSL. TLS 3, 1.3 या 3.0 समथिंग करके, तो वो हमारा encrypted है. पर ये नहीं बता रहा कि वेबसाइट्स ऑथेंटिक है कि नहीं. इट्स ऑल डेटा. तो जो फाइनेंशियल वेबसाइट्स होती हैं अक्सर PCI DSL जैसे जो अपने HIPAA वाले जो कंप्लायंस होते हैं मेडिकल के लिए, वो सारी चीजों को कंप्लायंस चेक करनी पड़ती है कि कंटेंट लेजिट है कि नहीं. सो दैट इज. बट एक मेजर ट्रेंड है, आप समझिए, व्हाट्सएप पे सेक्सटॉर्शन का. अक्सर लोग पैसे दे देते हैं. तो सबसे पहला रिपोर्ट एंड ब्लॉक, और दूसरा मेन चीज हनी ट्रैप की चीजें होती हैं, उसको भी हमें ध्यान देना है. सो दैट इज फ्रॉम माय साइड. Thank you so much. People recording more. Like YouTube पे है सारा वीडियो. actually क्लास करता था. ठीक है क्या? हाँ. दिखा दो दिखाइए रिकॉर्डिंग. हाँ. Thank you. Thank you so much. Thank you. That was very helpful. Thank you so much. Sir, please, sir, come, आप यहाँ से We want to thank PhD Chamber. We'd like to thank PhD Chamber for such a detailed information. Maybe we can have another session as a workshop sometime. Yes, master. Sir, please, sir. Sir. Please. Sir, please. They are from MHA. Okay. Wait. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. That is already pre-installed. That is pre-installed actually. We have Play Store में जाके Google will Which Android you're using? Android. Feel even better. Is it Redmi? इसमें install करना पड़ेगा. So you can join us for a cup of tea outside, please. Okay, I'll share the link. Just send me that your number. I can share the link.
Can I have a card, sir? This is my number, you can take. Sir, third line from chat. Sir, please. I sent you a SMS. Link भेजने क्या? I'll share the link basically. I'm having any program for colleges or. Yeah, we're doing actually. So you have to search it, research it, white check. Please connect with him. Uh-huh. Text message. The card is done actually, but you can take my number, please. If you want to. I received a weird message, account से recently. उसी से message आता है. Account में 30,000 रुपए credit. उससे आता है. आप कुछ नहीं करिए, आप एक बार रिपोर्ट कर दीजिए. ऑटोमेटिक में देखना ना. मैसेज आया. सैलरी ऑलरेडी मेरी आ गई. उसके थोड़ी देर बाद लाइव ऑन. It could be a trap. It could be a trap. We can check. I just deleted that. But still don't delete actually. We have to check the SMS header. जब आता नहीं AB hyphen SBI AB उसको SMS header बोलते हैं. It will be really helpful because yeah.